A very good morning to all. I, Dr. Khushbu, PG Scholar of PTHR Department NIA, welcomes you all again. Today, in continuity with yesterday's webinar, I would like to move on with second session of our webinar, National Webinar on COVID-19 Ayurvedic Management in Obstetrics and Gynaecology, which is organized by PG Department of Prasutitantra and Striroga, Jaipur. Today our speakers are Honorable Professor Dr. Lakshmipriya Dey ma'am and respected Vaidya Alok Sharma sir. So moving onwards with our speaker, I'd like to share you a brief intro of Honorable Professor Dr. Lakshmipriya Dey ma'am. She is ex-dean and head of Department of Prasuti and Striroga, IPGTRA, Jamnagar. She had got professional experience of 30 years. She has research experience of 20 years. Her research publications in peer-reviewed journal published are 105. She has attended conferences, seminars, workshops, national and international both. Ma'am has also delivered guest lecture as a resource person, national and international and state level. She has also participated as chairperson in various national and international seminars. Today here, ma'am is among with us. She is going to present on topic possible Ayurvedic management impact on COVID-19 in obstetrics and gynecology patient. I welcome you, ma'am. Over to you, ma'am. Please proceed. Hello, ma'am. Please unmute yourself. Okay, the slide is visible. Hello, No, ma'am. Still not visible. not visible. In the corner, you can get present now and share the entire screen, ma'am. Yes, ma'am. Now it is Yeah, yeah. visible. Yes, ma'am. Now it is visible. Thank you, ma'am. Now it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Am ma'am. I You are audible audible, ma'am. properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay. Om Sri Jagannathaya Namaha. Om Sri Dhanvantaraaya Namaha.
respected this webinar, Chief Pattern, Deepada Swiya sir, the Minister of Ayush, and a pattern, Dr. Koteja sir. Sir, I am saluting you for your such a remarkable and a just pillar of the progress of Ayurveda. Director Sanjeev Sharma sir, my dear friend Professor Bharati madam, Puspalata madam, then Poonam, Hetal madam, and Sonam, and all the PG, PhD scholars of NIA, and all the viewers of India. Really, it is a great effort by our whole the Prasutitantra team of NIA Jaipur that to conduct a webinar in Prasuti and a Striroga related to COVID-19. Really, it will be a milestone and a landmark for the Prasuti department. In this pandemic situation, there is no any really evidence about the gynec and obstetric data, but always we can't do the evidence-based practice, but practice can make us future evidence. So really, in this pandemic situation, till date, no any modern medicine or vaccine is available. So how to overcome this situation? It is really a great problem and a headache to the health sectors, authorities, administrators to save the life of general public, even the this pregnant ladies, newborns is a worldwide problem. So in this juncture, really I am very appreciating the work of NIA team of Prasutitantra and Striroga department. That something will come out from this webinar and something will learn by our practitioners of Prasuti, Striroga and PG, PhD scholars, which will be give a light, a touch bearer for the gynecological practice of the. So yesterday already Professor Sujata Kadam madam and Deputy Director of the CRS has already been highlighted about the obstetric problem that pregnancy related to COVID-19 patients and how to deal with them. Then our Srikanji, he has very nicely, very elaborately, very informative, has given part of the research trials are already been going on under the CCRS, Ayush, and all the institutes of India, even in NIA Jaipur, and this IPGT and are also conducting that is the four research works. The whole the drugs, what are the drugs like this Samanivati, Uduchi, then Sudarsana, then this Aswagandha, Pipali. So all these under this Ayush Kadha, then Ayush 64. So all about the drugs and how many trials, total the 68 trials he has been told, and recently it will going to be published. And the data which we are getting that is giving encouraging result that reducing the
hospital stay, and the saving the life from the critical situation, and prevention is most the important function of this or effect of this researcher. So why we are so doing this work? Because we know that is by the Manusmriti it has been mentioned that Bharjaya Rakhyamanayaha Praja Bhavati Rakshitaha Prajayam Rakhyamanayaha Atma Bhavati Rakshitaha. So if the woman health is preserved, then it can preserve the health of the future generation, that is the baby. And the future generation, Atma Bhavati, Atmanaha. So the generation will be healthy. And for that purpose, that is Dharma, Artha, Lakshmi, all we can get by the when we are taking the care of the women health. So, what is the importance? So, all these managements that different paricharya, garbhini paricharya, month-wise garbhini paricharya, how it is impact, because now we are in a running train, we are doing the work. So, nobody knows that what is the effect, what will be the future till date. But still then, we should monitor day to day, and then we have to go ahead and take the risk to save the life of the newborn baby, the pregnant lady, and the intrauterine fetus. So, so the impact management, what we are doing is the ongoing practice of the measuring and improving our the impact so that we can reduce the negative and the increase the positive mainstream impact management so that there will be fulfill the target, increase the immunity, and reduce the rate of the contamination, death rate, and reduce the fear. So, what the possible management impact in general, if we say, then it can the prevent and break the unnecessary exposure. So, check the transmission, reduce the hospital load, increase the good prognosis features, then timely management can reverse the fatality, make severe to mild symptoms, then mild to the cure. So if we say the field of the gynecology, then it will save the unnecessary transmission and avoid the unplanned pregnancy. Then save the complications of the pregnancy, labor, puerperium, and in so the comorbidity cases like bleeding disorders, like infertility, male infertility, which is the complication of the COVID-19. Then the cancer, then all the comorbidity disease like asthma, like our high BP, then diabetes cases. So all the complication will be reduced. Then reduce the abortion, miscarriage, fetal mortality rate, and also save the life of the both baby and the mother. So the global coronavirus pandemic has become the dominant issue throughout the world, while the governments, nation, and health services try to deal with its impact. Healthcare system are diverting their resources to looking after the patients infected by the coronavirus. So today the current status is the total infected cases are like this. So active cases and how many cures and death rates. So now the death rate is increasing day by day. So it is a very headache to the administrators, and currently the available resources for the fighting to the corona, it is the Arogya Setu app, then Ayush Sanjeevani, ICMR guideline, CCRS guideline, then Diksha online training, and but still then
there is so many lacunas, not enough data in gynec and obstetrics. So COVID-19 in Ayurvedic perspectives, if you see, it can be correlate with our Janapada Dhunsa or epidemic, disease or pandemic. Then Upasargika Roga, that is the contagious diseases or infectious diseases of the Jara. Then Kafalona Sanipatika Jara. Then Sasanaka Jara, in which the respiratory tract is infected. Then Hutavi Sangajar, Huta, which can't we see that we can say that is the Hutavi Sangajar. Then Rutu Vaisyaman is the positive factor for the Janapada Dhwansa due to the vitiation of the Vayu, Jala, Kala, and the Desh. So everybody, I will not repeat, not take more time about because everybody know the Upasargika Roga, how it is transmitted by the direct contact with the patient and indirectly use things by the infected person, and there will be transmission of the diseases like Jara, Sosa, Netra, Visunda, and Kushta, etc. In case of the Swasanaka Jara, there will be very acute fever, which we are seeing in this corona cases. And along with this, there is the symptoms of the swasa, parsasula, so chest pain, and the dyspnea, which we are getting in the corona. That is, the symptoms are similar to that of the Swasanaka Jara. And its complication is there is the insomnia, then with sometimes there is very weakness, so karya the patient can't do their own work. Then sangyahani, sometimes talapa, kampa, and there may be the cardiac arrest also. Papallona sanipatika jar, then bhutavi sangajar. So it is very nearer to this our coronavirus, the bhutavi sangajar, which is mentioned. We can say by the virus, it is the so Bhuta Abhisangachara is occurring, which is the treatment protocol. Very nicely it has been mentioned that is the Tikta Javag. In the Ahar, have to take, so prescribe the Tikta Javag. Then Murdha Vireja. So now we are giving all the Nasya Karmas like Anutela. So it has been mentioned by Charaka that is the Murdha Vireja and the Visagna drugs. So Visagna Chikitsa, because the whole body, it is the poison, that means infected by the virus. So there is the Visagna Chikitsa is mentioned. And in Charaka, how we can deal with this general line of treatment of the epidemic and the pandemic conditions, and how we can live in this pandemic situations. And so in that case, it has been very nicely mentioned that Panchakarma is necessary. So all that means the dosa avasechana by the Panchakarma therapy, and then use of the Rasayana drugs. But these Rasayana drugs should not be affected or contaminated during this pandemic situation. It should be collected before the condition started. Then take the proper medicines. Then Sadbruta Palan. So Sadbruta, that means the lifestyle, proper lifestyle. Devata Archana. And then the Sattva Chikitsa. It will be strengthening our mental health and the spiritual health. Then Sivanu Upasevanam. So Hitam Janapadanam cha Sivanam Upasevanam. So the mantras, inciting the mantras, then the Devata Pujana, and
lastly, very nicely, it has been mentioned that Sevana Brahmacharyasa Tatheva Brahmacharina. So, the copulation or coitus, it is strictly prohibited during this pandemic situation because Sukra Khaya say, if there will be Sukra Khaya, then there may be the Ojakhaya, and the Ojakha create the incurable diseases. So I think for that purpose, it has been mentioned by our acharyas that conception should be postponed during this pandemic situation, even if it has been mentioned that certain conditions when there is unstable of the ojan, like Khudita, Pipasita, Bhita, Bimana, Soka. So when there is a fear, when you are anger, and when you are the thirst or hungry, so in that condition, there should not be conception, should not be there will be copulation, because if there will be conceived, then you will give birth to a child with some maybe defective child, or it may be Kira Rupana. So I think our acharyas, they are very talented. So they know what are the situations there is a unstable of our roja, immunity is low. So that's why they are advised to avoid, that is vikara upasrushtanam ati balam ati pruddham dirgharogena vikara upasrushtam varjayet. So in this pandemic situation, or if there is the infected person or the post corona patients, or during the corona infection, there should not be do the coitus, and should avoid the conception, so that we can save the child also from the future diseases. So, and we know that Ayurveda, it has been deal with the disease by the four factors like ahara, achara, and the sansodhana sansam. So Sansodhana, elimination of the dosas. Sansamana, by the treating the oral therapy, by giving some rasayanas, some drugs, and then the diet, ahar, and achar. That is the lifestyle. So lifestyle and diet, it is among the four factors. So it is the two factor which can make us the healthy and prevent us from the diseases, any type of diseases. So that's why it has been mentioned by the Buddha, Dasavadya Samampati. So the diet is equivalent to the 10 doctors. And the Ahara iti Mahavesajam iti, it has been mentioned by the Kasya. So in this situation, what we have to advise, that is a very lagu that is easily digestive, fresh laja manda, adrak, it can be, so laja tarpana, laja manda, it will be add with the adraka, ginger, saindhava lavana, then masoor dal juice, then the kismis, chane juice, mudga juice, khajura, dadimba rasa, and the either ajadugdha or cow. Then what may be the drugs? What the drugs we should use in this pandemic situation in case of the gynecological cases? Even if suffering from the fever or any type of these symptoms like respiratory symptom or GI symptom also. So you have to take the combination like Tripla, Uduchi, Sudarsana, Kipli, then Sansamani Bhatti, Suvarna Basunda Maltiras, Rasayana. And in some cases, when there is the any critical situation, then Kasturi Bhairav, milk, ghee, then the Sadang Paniya, daily use of the Sadang Paniya, Tripla Jala, and a ghee plus ghee with liquor can give the message also. So other the decoctions like Patola, Anantamula, Musta,
Arkamula and a Katu. Orca, it is a very good antibiotic in Ayurveda. And this is the Patanu, Loman, and Batha. And a Katuki is the Pitta, then Patola, Anantumula, or an indicated for the jar. Nimba, Patola, Tripala Musta, Daksha, Utaja. Till the Jorahara drugs. Then Kasturi Bhairabrasa. When the in fever, it is my experience that when the fever is not subsiding, and by giving the 6 hourly the paracetamol, then I am giving the Kasturi Bhairabras along with the Tripla because Tripla Joraharana. So Tripla and a Aragavati. So some disciplines. You know that is the Ahara Nidra and Maithuna. These are the Traya Upastamba of the supporting pillars of the body to keep our body healthy. So that is the daily life, sleep, bath, rest, yoga, pranayama, meditation. And to avoid the quitters, always it is advised our acharyas that Atistri Sevana, Atistri Sanjogat, Rakshat, Atmanam, Atma. So it is very harmful for the life. So what is the managing impact on the prognosis of the prognosis features? So by this diet, lifestyle and drug, it will induce the good prognosis. Good prognosis, how to assess the good prognosis? That is the dosa pachana. So dosa pachana lakshana, that is the proper function of the pancha indriya, jnanendriya and the karmendriya. That is they are very enthusiastic to do the work. Then all the complications, including the trusa, reduce and remission of the fever. Then malapaka, when there is the malapaka, then no tenderness in the chest, reduce the daha, tandra gaurava. So by the deha bala, agni bala and the chetas bala. So from that, what is the digestion power and the working capacity, then the mental strength. By three things we can assess the good prognosis. Then bad prognosis. Always the Dhatupaka Laksana is the very critical situation for the patient, and it occurs generally if there is high grade fever, then where fatal date are the 7th day, 14th day, 9th or 11th day. If fever not subside within this period, then there may be possibility of the death. So, how we can know the critical condition of the patient, that whether this patient should be treated in the home or it should be referred to the ICU or the hospital? That is the sleeplessness and a chest pain, then udara bistambana, so flatulence and a gaurava, then aruchi, chitta asthirata, imbalance and balahani. So very weakness. You see that the corona patients, they are very weak. And then the jara tivrata. So there will be acute fever with the thirst and a swasa kuchrata. So there will be the dyspnea and a pain in the chest, then navi, and there is also the symptom of the atisara diarrhea. So some patients, they have nothing but one of our staff, so husband, he has nothing but only he has the diarrhea and a weakness. So when you are just prevent for the prevention purpose, he just do the rapid test, then there is positive. So you see how our acharyas already knows that these are the conditions that which is the dhatpaka lakshana or the critical conditions. It is by just we can assess that this is the any infection is there. So he has been told that by panchakarma therapy, by taking the rasayana, doing the sattavajaya, and taking the drugs, then the uh, then obeying this brahmacharya or a celebration, then we can prevent the disease. So
For this seasonal elimination of the dosas, it's very, very essential that to overcome the viral diseases, any type of viral disease. Because today there is the corona, there was the flu, and there may be some now the next another virus is coming. So day to day the virus are increasing day by day. But if we do the Haret Basante Sesmana, Basant Rutu, if we do the Baman Karma, Sarat the Virechana Karma, and a Barsasu, we do the Basti Karma, then we can just service our body like our vehicle and make it strong and longevity will be increased. Then what are the Ayurvedic procedures? Some having some impact like Dhrupanakar. So already Sujata madam has been told that in Karpura, Arati Karpura. So that's why in our all the temples there will be Karpura Arati. So and a ghee with. So to the just eliminate the virus from the air or air to prevent the airborne diseases. Then Havana Yagna Karma. Then the Sinchana, that is the spraying. The Ayurveda has been mentioned that is the Limba Patra, that is the neem decoction to spray in the our floors and mopping our floors. It will be prevent the virus and kill the virus. Then washing the cloths with the herbal decoction like Nimbapatra and the Sudhaspatika, then drying it in sun ray, then it can kill the virus and prevent us from the diseases. Then taking the medicated bath like Sarvo Gandhodaka, like Haridra, Chandana, Nimba, it will be also kill the virus from our whole body. And then gargling by the Gojivhadikatha or Panchmarkaladikatha or Nimbadikatha, then Gandusa Dharana and a Suvana Prasana. It will also improve our immunity and which can able to prevent the diseases. So immunobooster is the main focus for the prevention of the treatment. So everybody know that is what is called immunity. So there is no need to elaborate it. And only the immunity can prevent the viral diseases and the viral disease can treat only by our improving the immunity of our body. So it is mentioned as Vyadikamatta, Pala, Oja, Agni in terms in Ayurveda. So how the common causes of the disease that is, we know that sarvesam eva roganam nidana kupitam and rogaha sarve api manda. So due to the mandagni, the disease is created due to the formation of the ama, which is the positive factor, or T and alpha is the positive factor for the creation of the diseases. But the same time, we know that is what is called chikitsa, that is the dhatu samyam to chikitsa. So whatever each body is going on, that is up and down. But if the dhatu, if the srutas, and every dhatu has its srutas, so if it is unaffected, so when until and whether there is not Khaivaigunya or Srutas is not involved and Dhatu is not visited, then we can't suffer from the diseases. That's why the same virus, though it is moving in our air, but all persons they are not affected at a time. And one more thing, the disease can also create the diseases. That is fever. It can also causes the Swasikosta or dyspnea. It can causes the headache. It can causes the any other systemic disease. So, how can we assess the immunity of the person? So very nicely, to know the immunity or the strengthening of the body, our Acharyas has been mentioned that Satmyato Alpat. Those who subjected to antigen in very low dose, the body is immunized. And then the Tagni, those have the strong appetite, young. So, we know all that now our young mass,
that is the PG, PhD scholars, all are, they are involved just at the Corona Jodha. Actually, they are doing the, in our institute, JMC at the Jamnagar municipality, they have doing the continuously the month together the duties. And till now, no any doctor she has in critical condition. So it is the young individuals, their immunity is very strong. And then the diet, that is Usnam Snigdham Asniya. So that's why our Ayurveda is always telling that when you are taking in roti, adding some ghee, or taking the rice in south, then adding also some ghee to it, which is very essential for the glucose metabolism and asana. So again, doing the regular exercise, having the strong build, then improving the or the working capacity, then enthusiasm with patience, then excuseness. You see some persons they are very irritating. So for that why it has been mentioned that Khina Jana Niskaruna Bhavanti. So which is weak, he is the giving the punishment, but which is strong, always he escapes. So always in positive thought, not frequently suffers from the diseases, or if suffer, then easily cure. Always in decision making and a cool mind. So from that we can know, assess that is the immunity of a person. So what are the factors which is affecting the immunity? That is the 3D: diet, discipline, and so it is harshening the immunity, that is the ahita ahara. So ahita ahara, that means which is not convenient to our body, to our body. That is the ahita, which is the dosa vitiation. And then the discipline, that is the lifestyle. Ratri Jagarana, Diva Swapna, then Begdharana, the natural urges, lack of yoga, pranayama, prayer, then lack of brahmacharya. Now, in this pandemic situation, there are so many domestic violence that so many that females are complaining about the men because there is no work. So drugs, juice, steroids, hormones, they are the now contaminating these vegetables and the grains which we are taking. So which is hampering the immunity of the body. Then we have to just I am draw your attention about the ahar that already in Susruta has been mentioned. Sansodhana Sansamana Aharacha. Tesam Nigraha Hetava. For the all diseases, these four measures it has been mentioned by our acharyas. So the Sansodhana, that means all the panchakarmas, then Sansamana, and in Sansodhana also the operative management also, then Sansamana, the medicinal, diet and the lifestyle. Why the diet is so? Because the pranina punar mulamahar. Because we did the basic things, the diet, which is giving bala varna ojasa. So diet is the main factor and a rasajam purusa. So a garbha also the comes from the ras dhatu. Our body growth and development it is also from the rasa and which is come from the ahara rasa. Then so disease condition and healthy condition depend upon the diet. So ahar for the health, hitabuk. So that's why who is healthy? Who is taking the hitabuk, mitabuk, that is the quantity and the rutu, it is the seasonal time. So
But what is happening? That now the all the persons, if they are getting party part, then they are just using that is the unwholesome foods which is hampering, and the adhyasana, then ajirna adhyasana which are the creating the disease. So time for intake of food is also the taken into the consideration, such as the Vata people should be take smaller quantity and frequently, because Vata Bisam is marked. And then so copper persons should be skip their breakfast and they make the lunch as their largest meal. Then elderly persons should have their anti-Vata diet. Middle aged persons should comply with the anti-Pitta diet, and the children should give in the anti-Kapha diet. Similarly, men may consider the more anti-Pitta diet, because Snigdha Sita, Purusha Lakshana is the Snigdha Sita. So should be avoid the anti, they should take the anti-Pitta diet, and it is opposed to women that it is favoring more the anti-Kapha diet, because Usna Snigdha Lakshana are cultivated. And a water intake, it must be the always Usnodaka Snana, Usnodaka Pana, and the Nivata sign. So Usnodaka, in now you are seeing this pandemic situation, always the doctor is advising, and even in hospital also there is the lukewarm water is available for the drinking. So it is already mentioned in Ayurveda that is a conditions in Jara conditions, that because ama sayastha Jara. So ama is the site for the kapha, and so that's why the pipasa Jara santa hai. Prasutitantra jalam gahe pipasa Jara. So this the lukewarm water should be taken. So during the process of eating, water taken in small quantity, and it is the to intake water in small quantity is recommended. Then avoid the incompatible diet, that is the rukhya, then chilled foods, then honey and ghee equal quantity, then non-veg with curd, then drinking too hot or too cold. So again, our diet should be according to our agni. Otherwise, it will create the ama and it create the diseases. But properly, if we take according to our agni, then the body governs this process. The vital breath, that is the prana vayu, positive immune system, ojas, cellular intelligence, all are the nutrition and the diet. That means it is the depending upon our agni. So the dietary factor affecting the nutrition and the immunity, that is the ahita ahara. Ahita guru sitam ati snigdam. Atimatram samasnitam rasavahini dusyanti chintanam ati chintanam. So not only the diet, but the psychological factors like our stress, strain. So it is also affecting rasavahini dusyanti. So this is the main the srotas, the first srota, that is the rasabha srotas. So it is the vitiated by this. And then, so if the rasavahini is the vitiated, then it is the next dhatu, that is rakta mansa meda, all will be vitiated, and then the artha will be vitiated, supra will be vitiated. So there will be the creation of the reproductive tract disorders in case of the female. So all the gynecological disorders will be occur due to the fixation of this rasakasva. Because once again the rasa, the upadhatu of the rasa, it is the artava and the stan. So the breast disorder and the reproductive tract disorder, it is maybe due to menstrual disorder, all are maybe due to this rasa srota dusti. So discipline, that is the ratri jagarana, divasapna vegadhara, lack of yoga pranayam. And you see that is the Dusi Bisa now, the fertilizers, the pesticides, the hormones they are using in the vegetables with color, chemical matters. So which is the positive factor of the now the anemia and the rasapasutodystia. So some small tips, that if you go to the this doctor, modern doctors, they will take that, take the leafy vegetables.
But Ayurveda saying that sakena malavarthate roga varthate. So don't take the daily leafy vegetables at least once in a week or twice maximum. And taking one fresh lemon juice can prevent the diseases. Then take the fresh and proper cooked foods with the involvement of the sadarasa, timely as per the Agni season appropriate quantity can give us the health, long life, take proper sleep and a positive thoughts with regular exercise. So impact is rasjam pursam. Our body derived from the rasa. The ahar itself should be sadarasa. Body creation, growth, development, then health and healthy status depend upon our diet. So taking proper food following the guideline can help improve the immunity that can prevent from all sorts of diseases, including all the viral diseases like COVID-19. Reduce the complications, increase the cure rate, and decrease the morbidity. So, Begdharan. So, Begdharana, one of the fatal cause for the creation of the diseases. So, that's why our acharyas tell that na Vegadhara yate bhatta mutra purisa. Why? Because the apana, samana, prana, they accelerate and they control the whole function of the body. The same sloka is mentioned by Charaka, by Susruta also. So, how this Vega Vrodha Vata Mutra Purisa? It is the the Apana Dusti, and then Apana mixed with Vyana, then it is create the sthanika diseases, and when it is initiate the Saman Vayu, then there will be Agni Dusti or Mahasruta Dusti, there may be GIT problem, and again when it will be vitiate the Prana Vayu or the Pranabhasrutas, then maybe there may be cardiac diseases. And Pranabhanan Srutas and Sudamula Mahasrutas. So the Agnidusti can create the cardiac diseases. And in this corona cases, that is the main is the symptoms now increasing day by day. That now the including the this respiratory system. Now it is the also affecting this is the cardiology and so many cases they have just improving, but lastly that is doctor is saying due to this cardiac failure patient. So you see that is how this वेगावरोध अधवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक्लमः वातमूत्र सकृत संग. So वातमूत्र सकृत संग दुष्ट अग्नि, there will be agni dusti, agni baddha, that is the agni baddha, agni nasa, and a hrudgada, there may be cardiac diseases. So you see that is the simple the vegarodha how can create the cardiac arrest and death also. So there are so many diseases also gynecological diseases occurs due to this vegadharana, that is the ursa, and we can say that is the in polyp or any cervical polyp also. Then the abdominal diseases asrukdara, apana pita sanjukta dahosna sat asrukdara, then the dysmenorrhea, or even tuberculosis also, that is vegadharana. So then during the pregnancy also, so we should be prevent the vegadharana to overcome the diseases. And so if there will be any history of the vegadharana, then we have to give the treatment at the tongue taila sita jaranasa. So there must be the lukewarm message of the oil batana samakausa, and then the nirva basti or bireka, or if simple we can give the tripla churna weekly with the warm water or with the rendite. So Usnadaka Snana, Usnadaka Pana, Nivata Sand. It is the best to prevent the from the diseases. And then the Rasayan Seven. So Rasayana, that is can be prevent the diseases and promotion the health. And but this Rasayana must be timely given. So
There was one study in the basic principle department that they have given the rasayan drugs like ashwagandha churna in the young age group, that is 16 to 30, and the 30 to 35 years, then more than 50. And if you see the result, that is the young persons, they have more result that in middle age group, that is the 60 to 60. So, and in our department, we have taken some rasayan drugs given the pregnant lady in the first trimester, in second trimester, in the third trimester also. That is the Arjuna, Satavari, Bala, Kuruchi with the Khirpaka. But it is giving excellent result in the growth and the development, and after the birth also, that is the parents are telling, oh, he is the Ayurvedic baby, so that's why he is not getting that much of episode from the affected from the diseases. So I think, and in this webinar, through this webinar, I'm requesting all the viewers, all the faculties, please you also use in your institute the rasayan drugs, because purbe vayasi madhyama. So purbe vayasi, before the birth you can give. After the birth there will be vaya will be started. So in pregnant case we can give this rasayana, which will be, if her seed, if her cells, if her the tissue, if the growth and interest and growth and development of the baby is the bias will be strong, then baby will be much strong and prevent from the disease with lung disease. So I will not repeat that is what is the how the COVID-19, what is its incubation period at 2 to 14 days, and what is the transmissions, and everybody know that it is the high grade fever with the body pain and a severe cough along with. So I will not tell all these things. It has been already been covered by the Sujata madam. Then the novel coronavirus and the human reproduction. So how it is affecting the human reproductive system, that is the gynecological part which is left for me. That is we see that till today there have been no any reports of the virus in female reproductive tract, in vaginal secretions, in amniotic fluid, or in the peritoneal fluid. So the current data so that suggests that the female reproductive system may be the spared from the viral infection, and it is from a small cohort study. But in case of the male, there is the evidence to suggest that the coronavirus infection may be impact the male reproductive tract, and the main receptor for the coronavirus viral entry is expressed selectively by the reading cells of the adult test, and there are the numerous report of the male reproductive injury after the coronavirus infection. So future we will face that is the male infertility. Those the persons are affected suffer from the coronavirus. And there are the reports are decrease the sperm concentration and motility for 72 to 90 days following the coronavirus diseases. So in this condition, so with all the medicines we have to give some suprasodhana, supravardhaka, drugs, diet, and we have to advise that should we maintain the celibacy, brahmacharya, so that they can be prevent from male infertility. Then severe acute respiratory syndrome coronavirus infection in case of the children and adolescents are the, it has been summarized that 20% of the children and adolescents SARS COVID-2 infection are asymptomatic. And madam also discussed, Sujata madam, that 80% cases they have the mild symptoms, and only the 20% cases it is the hectic. So we can deal with the 80% cases, but there is some complications also. There is septic shock, acute kidney injury, then the virus induced the cardiac injury. That's why the death is occurring in the mostly
in the ICU, and the patients are in a ventilator. They have the death is due to this. So impact on the late pregnancy, already we have been discussed, Sujata madam, that in the first trimester, second trimester, there is not that much reporting of the this abortion or intrauterine death. But in case of the late pregnancy, there is a premature preterm delivery. But so preterm delivery, so we have to take care and give the rest. And there are some Ayurvedic drugs like Satavari, Khirpaka. So it can also can prevent the preterm delivery also. So supportive therapy, that is the general adequate rest, then the dehydration therapy and a nutritional support and water and electrolyte balance. Then so giving this our sadam paniya, our this is guduchi, and then the satavari, it can be very use, useful. And in Ayurveda, we can also give the Dasti Madhu Aswagandha Gudichi to the pregnant lady. For the immunobooster, the Tripla, Sudarsana, Pipli, when there will be the fever during the pregnancy. We are giving this Tripla, Sudarsana, Pipli, and sometimes we are also adding some Guduchi, Sudarsana, Tripla, and Pipli in 6 hourly. And sometimes we are also adding that is Subana Basandi Malti Rasa in our OPD, all the pregnant cases we are giving from the when the day of the coming they are attending OPD, weekly once the Subana Basandi Malti Rasa along with the this rasayan drugs like Guduchi, Satavari, Bala, and this Saptamrutalaha, this Pravala, we are giving regularly. So one more thing, that is the old women, that is the menopausal women, they are more risky. So how to prevent them from the this corona? How to take the care of them? How to manage them? So in this case, the psychologically, mentally, and the spiritual health. So three health we have to increase, and this gynecological problem also. So for the mental health, we have to give the nasya therapy, or we can say that you this satadhota gruta or anutela, she herself can take. Then for the hypertension, then continuously take these medicines like sarpagandha dhanavati, then gokhira, jatamansi, guduchi, arjuna, haritaki, or take the sirodhara also. Then use some rasayana drugs to prevent from the diseases like Satavari, Hidarikanda, Methi, those having the diabetes and the calcium supplementation. Then Asagandha, Amalaki 6 gram of Amalaki taking daily can prevent the cataract also. Then Kuduchi, Jatamansi, Sankpuspi, Brahmi, Prabala, Punannava, Eranda, Balatela, it can be Atibala, Bala and Atibala. It can prevent so many diseases during the menopausal period. Then the diabetes, if there is the menopausal woman is suffering from the diabetes, then we can give the Haridra, Amlaki, Uduchi, Nimba, then the Udumbara and the Jam, along with the Chireta also. Then if to protect from the heart disease, we know that it is 3 times more risky of the menopausal women to suffer from the heart diseases. So to for this prevention, we can give this Silajitrasan, Ugul preparations, then the Rasona in diet, then Amlaki, Tuna Panchamula, Rasayana Poti, herbal and herbo mineral drug, along with the gold preparations like Jogendra Rasa, it is very good effect in Nispandhav and the Savasan, then doing the either the Virechana, or you can do the post Sodhana by giving the errant tellers. Some important drugs beneficial during the menopause like Punanavasava, Jogendra Rasa,
Panchamula Patha, Arjuna, Pustarmula. Then Basti, we can now it should be postponed and we should give the only oral. Then there will be dry skin or the scaly skin, then we can advise the liver oil massage and the steam bath. So for the mental problem, Supta Vaja Chikitsa, meditation, inciting mantras, prayers, worshipping God, elders, then doing the yoga practice, pranayam, Ayurvedic medicines like Smriti Rasa, Brahmi Kruta, Saraswatarishta, then the Panchakarma therapy like Sirodhara will be very helpful. The daily doing the physical exercise. Then taking the Rasayana Kalpavati, which is preparing in this our institute, and it is the ingredients are Haritaki, Amlaki, Guduchi, Manduka Panijatamansi with Pul and Pravala. Then Bhavana is given by the Amlakiswara 7 times. So the continuous taking this Rasayana Kalpavati, it is the having very good effect in the decreasing the all the menopausal syndromes in dose of the 2.5 grams reading with liquor milk by oral route can be take continuous also, and the rasayana bati also it is available in this Jamnagar local market, so it has also very good effect. So impact we know that is the elderly and with diabetic, high BP, asthma, cardiac, and cancer, and current diseases. So, by giving this immunoboosters rasayans, we can successfully prevent the spreading, reduce the complication, reduce the morbidity. So, gynec related other diseases like this, I have already discussed that is the infertility, the male infertility can causes, but the female infertility cases here OPD just normally what we are patients are doing dealing, we are number of the this patients we are reduced and the procedures as our hospital now it is a declare as the COVID hospital, COVID care. So we are not doing any procedure, only oral medicines with what the Postasuddhi they can or weekly by the Tripla or the this Abhipatika Chunna we are giving. And in those cases they need the emergency like Asrudar cases, bleeding regions. So we should not be fear about it by maintaining the hand hygiene and maintaining the distance, social distance. We are attending the case and they, as per the routine, Asrudara like Pasadipata, then this Sonitargal Rasa, Raktastambak Yoga, we are giving. And in case of the fibroid cases, generally those have these symptoms like bleeding, etc. They are dealing with it and they are giving these drugs like Panchatikta Ghruta, along with the Lekhaniya Mahakasaya, then the Jairabilyati Kasaya, then the Sivakhar Pachan. If there is bleeding, then we are giving that is the Raktastambaka, Sunitargala, and the Sutta Spatika, etc. So, if there will be the cases of the cancer cases they are coming, so it is a very critical to deal with them. But if the patient is in okay and the patient health status vitals are okay, then for this case we are dealing with the case one cases just 1 week before she had the breast cancer and advised by the doctor for the for the operation excision of the breast. But when they have gone through again the mammography, then they have seen that there will be the spreading to the lungs. So they postponed the surgery, and that patient came to me, and we have given to her that is she has no any diabetes, she has no BP. So it is easy for us to that is we are giving this Gomudra Haritaki along with this Subana Basani Malti Rasa and then Manjisthadi Kasaya, Kanchanar Bukulu, and some Rasayan drugs we have given. Then in case of the adenomyosis cases,
So adenomyosis cases with this gomutra with haridra and a gomutra haritaki, then varuna sikru kasaya with this gokhiradi gugu. It has very good effect with asmul kasaya also. Then the endometriosis cases and a chocolate cyst. So just before we have attended the OPD and dealing with the patient of the endometriosis like Batik, Joni, Vyapat type we are dealing. Then in case of the chocolate cyst, Antarbitra, the line of treatment we are giving. Then the PIT cases, if there is infection by USC findings, then we are taking the help of the modern. And after the infection is over and antibiotic course is over, then we are maintaining with this Arogyavartini, Chandra Prabhavati and Agni Tundi that has very good result in case of the PID. Then in case of the UTI, again our Ayurveda has a very good result in Chandana Sabu, Chandra Prabhavati, and then the Gokhiradi Gugu, Punanavasta Kwatha, he has also good effect. Then in endometrial tubercular cases, so after they are taking the multi-drug therapy, we are giving this is Varnabhasan Malti Rasa with Bhuta and Madhu Anukkal. He has very good result and with endometrial tuberculosis and the infertility cases, we are getting very good results. And a surgical intervention, so we are not now doing the surgical cases, and we are referring as there is a COVID hospital in our area. So the surgical cases without the emergency, we should postpone it. So clinical manifestation of the COVID-19 during the pregnancy and after the delivery, it has already been covered by Sujata Kadam madam. What do we know that that is the fever 40%, cough 39%, then lymphomania is the 35% with the CR protein 49%. So in these cases, we can also successfully deal with the patient by giving only simple guduchi 3 gram, 3 gram guduchi, Triphala chuna 3 gram, then Pipali 1 gram, and a Sudarsana 2 gram. 6 hourly with our Manjisthadi, Vatha, or Sadang Paniya. It has been giving very encouraging result. So, then outcome and related to COVID-19 pregnant cases, that is, that is the 80% cases they are mild, but the 20% are the severe cases. So, for that purpose, we are in severe cases we are just referring the cases, and as there is a morbidity case is very less, so just the pregnant cases we are dealing. If there is fever, if there is symptoms like Sitapaladicuna, if there is any dry cough, then Sitapaladicuna we are giving. If there is any fever, then Sansamani Bhatti, Sudarsana Ghanabhatti with Lakshmi Vilas Rasa we are giving. And if there is no pregnancy, then Arogya Vardhini, it is very good results. And some maternal risk factors during the pregnancy, there may be, if there is high BMI, there is the elderly priming, and the having the chronic hypertension, pre-existing diabetes. These cases, they need the sometimes the intensive care unit limits. Otherwise, we can manage. Then the maternal perinatal outcome, the pregnant cases, it has already been covered, so I will not give you the time. So possible impact of the Ayurvedic management of the COVID-19. Every pregnant woman should follow the preventive measures with the utmost importance. Diagnosis and management in pregnancy should be done according to the ICMR guideline, and the minimum in persons should come
that is only the 6 times she should come, that is in 12 weeks once, then 20 weeks, 28 weeks, 30 weeks, and then 36 weeks, 37 or 41 weeks. And unnecessary, don't allow the patient or don't advise the patient to come to the OPD. Unnecessarily, it will be exposure, and the telemedicine can be advised to the patient. Some Rasayan drugs we can give for the patients like our very nice is the Guduchi, Satavari, Bala, it is the Arjuna, it is the immunobooster, and it will help the growth and development of the fetus also. Then drugs like Satavari, Bala, Guduchi, Amlaki, Drakya, Jeevanti, Gopkhura, Arjuna, Brahmi, and Khajura, Aswagandha. It is very helpful for the maintaining the normal health and growth and development of the fetus. So one clinical study by the Dr. Suprabha K. Rasayan Avaleha, Rasayan drugs for the fetal growth during the pregnancy. It increase the fetal birth weight and a fetal immunoglobulin also. So Rasayana we can give during the pregnancy to increase the immunity not only the mother but the baby also. So possible impact on the Ayurvedic management that low risk case and moderate cases we can very nicely deal. But high risk cases we should take the help of the modern faculty. So peripheral cases, it has already been mentioned, covered by the Sujata madam. But still, then, if with the hand hygiene and with the oral hygiene, and then maintaining the hygiene, the breastfeeding not transmitted, so breastfeeding is allowed to the patient, and we can give the patient to Panchakola, then Udodaka, and Kuda Haritaki also we can give during the peripheral period. Some Rasayan drugs also, same Rasayan drugs we can give. Then in mild and moderate symptoms patients also this Sansamanibati, Sudarsana, Sadapaniya, Dasamula Kwatha, then Ruchyadi Kwatha it is available. Then Agastya Haritaki can give in case of the if there is any respiratory problem. Then Sitapaladi Chuna. So, with these general measures, these drugs speedily cover recovery and prevent the morbidity, reduce the hospital stay, and a need of oxygen and intensive care. So, then the possible impact on the Ayurvedic management in unit that if we do the Thupan karma with the Rakshagna drugs, mopping the floor with the Nimba Dipatha, then express breast milk should be fed to the newborn by healthy caregivers. Then positively, we can prevent the newborn also from any type of infection. So possible impact on Ayurvedic management in gynecological conditions that can manage. I have already been discussed. So we have to improve the general health of the patient so that the gynecological cases accordingly just normal cases where if there is no symptoms, if there is no fever, no any respiratory complications, no any cardiac, then we can deal the patient very nicely along with some preventive care like Sansamanivati, Uduchi, etc. So but in regular the OPD, the gynae cases, those are attending, so there is no harm. But we should be limited the cases with a social distancing and a won't. Uh, if it is not need, then don't touch all the patients. In our OPD, all the patients are coming with the thermal after the thermal scan. So we can, in case of the Joni Prakhalana, we should not do, we can advise also for the seed bath and for the Dhupan karma. So we can take
and some pichu also we can advise. Then they maintain the respiratory hygiene, that is the nasal installation, the moisture and coat the mucous membrane, then protecting from the harmful respiratory droplet infections. Then the medicated smoking like karpura, inhalation, medicated smoke, inhalation. Then the lavanga, haridra, maricha, ela, erandamula. So you can fume it and take the smoke, inhale the smoke. Then oil massage, we can use the katu taila or the liquor bala taila also. If it's simple, the sesame oil also we can use and take the hot bath. Then do the regular exercise, do the yoga, do the pranayam, at least the half an hour morning and half an hour the evening, and take the sleep properly, avoid the day sleep, then eat healthy. We have already been discussed, and take some this haldi, jeera, dhania, lasun, and a cinnamon, the spice. Then try to add fruits, that is the fresh fruits, vitamin C like lemon, should take, and then now the amrut is available. So the apple and this guava, there is the equivalent to the vitamins, so we can take and avoid ice cream, junk food, and all the fast foods and junk foods. Then take the nitya pathya ahara like sali rice, muga, dal khichdi, then the mixed vegetables, etc. So Dhupan Karma already I have discussed. Then immune promoting measures, take the herbal drinks, mix with this ayus kadha, and then add some jaggery, fresh lemon juice also. Then golden milk, 1 teaspoonful of the haldi, turmeric, and use 1 glass of the milk. Then in high risk group, that these are the medicines like Sansamanibati, Sadankaniya, Subanabhasan Martyras, then the Panchatikta Kasaya or Panchatikta Bhuta, Sudarsana Guttika, Indukanta Bhatti, you can take also. Some plants which may be prove useful for the combat the viral infections like Guruji, Patuki, Tripla, Haridra, Nimba Tulasi, Adraka, Lasuna, Jastimat, Ajwayan, Bilbo, Asogandha, etc. We should take regularly. Then, what are the researches? IU research updates. So type of research which has been already covered up by our Srikanji, that two types of mainly research, the observational study and the retrospective study and survey study. The three types of study has been done, and the trial has 68 trials has already been going to be completed. Now it will be published, and from this study, that the drugs which have been taken, that is the I-64, Sansamanibati, Guduchi with Pipli, Guduchi with Asagandha and Pipli, then Sudarsana Dhanabati, Ayush Kadha. Then in Gujarat, in our institute, that is the Sansamanibati with Guduchadipata, Sansamanibati with Guduchadipata, Dasmulapata, Pathyadipata, and Tripata. They are giving the 45 days, and by this we are reducing the patients of the hospital stay and intake of the oxygen, and from the critical situation, that is the ICU. So the recovery rate is very good. So my personal experience, that is the in gynecological cases we can also give, that is the Ayurvedic, it is the best antiviral effective Tripla, Sudarsana and the PIP. In critical cases, when there is the history of the asthma or respiratory any disease, so we can give also Kasturi Bhairablus. Subana Basandi Maltiras, weekly once we are giving all the antenatal cases, and those want the prevention we are giving. Then Jogendra Rasa in case of the PIH cases or those having the high BP. Then Chandraprabha Bhatti in case of the UTI, all the treatment protocol adapted.
For the Rajajatma and Bhutavi Sangajara, we can also implement the trial involving the four factors like the Sansodhana, Sansamana, Aharachar, with implementation of the Rasayan can positively control this pandemic situation. So take home message. Early rise, early to bed. Take warm oil message. Gandu Siddharana. Siro Virejan, that is the Mudha Virejan. Then the Surya Namaskar or Surya Snana, doing the pranayama. Then Kapalabhati to improve the lungs capacity. So yoga, then meditation, positive thoughts with regular exercise. Use of the Nitya Pathya Ahara like Sali, Sasti, Mudga, Amalaki, Dadima, lemon, coconut water. Then the muli is very rich of the zinc. Then use of some rasayana immunobooster drugs. Use of the Trikatu, Huruchi Patha, Pathyadi Patha, Dasamula Patha, Sansamani Bati. So Subhana Basmi Maltiras, Kasturi Bhairav and Brahmacharya Palan. Then timely adequate sleep, work up to limit. So positively, we can fight with this pandemic situation and make us healthy. So Ayurvedic precautionary measures like Ayurvedic mask, reusable medicated mask, Ayurvedic sanitizer with made up prepared from the neem bark. Then the fumigation by the fumigated this Rala, this which we have already discussed. Then internal medications. So पिबेत् अग्नि विवृद्धतं न च वेगान् विधारयेत् अग्निदीप्तिकरन् रोगाणां शमनं करेत्. So we should do take all the diet which will not suppress our digestive fare. We take agni bhurtyatam and then we should not be suppress the natural urges. So if our agni digestive power is okay, then positively we will free from the diseases. So tips to get the healthy long life in pandemic situation that ayusam bhojanam jinne. After the digestion of the food, then only take the next and the veganam cha abhidharana. So don't suppress the urges. Then brahmacharya and maintain the celibacy. Then ahimsa. Don't be jealous. Don't be think bad thoughts or negative thoughts. And the sahasana. Sahasa means don't keep not. What is your limitation, and do likewise the virgin. So then we can get the long life and a healthy life. So namaskar with social distancing and then with using the mask. So once again, I am thank you very much to the director sir, to my dear friend Bharti madam, Puspalata madam, uh, then Hetal madam, Poonam madam, Sonam, and all the NIA team and all the viewers, those are attending this webinar. So thank you, one and all. Namaste. Thank you so much, respected ma'am, for such an informative and wonderful presentation. We are blessed to have you here among us. We came to know possible Ayurvedic management impact on COVID-19. We also came to know detail about the management impact, currently available resources. Ma'am has also put highlight on Ayurvedic perspective and general line of treatment in epidemic. And we also came to know how dietary factors can affect the nutrition and immunity and Ayurvedic precautionary measures also. Thank you so much, ma'am. Ma'am, with your permission, shall we move on with questions of participants, ma'am? Okay, okay, Thank you, ma'am. okay. There are many questions, but due to the limited time, we'll be taking the few questions. Here, Dr. Swati says, is Bidanga Churna is safe to be used during pregnancy for deworming? Madam, I have not that much experience about the Bidang tuna. Bidang has also rasayan property, but during pregnancy, till now I have not given. So
Okay. So Thank you, ma'am. I can't advise Thank you. because Thank you, in ma'am. pregnancy deworming is not indicated. So after delivery, she can use. Thank you. Thank you, ma'am. Moving on. Dr. Sheila says a lady had a history of bad obstetric history and she is COVID positive and she has recently conceived. So, what type of precautions can be taken? So may I know that is the what is the gestational age? How many months she is conceived? For amenorrhea since 4 months, ma'am. Okay. So now it is the 4 month. So 4 month में क्या हो? What is happening? That is the गर्भ स्थिरत्वम आपद्यते. So now she can take the rasayan drugs like so as she has some history of the bad obstetric history. So she can take the Pasmaryadi because one PhD study in the bad obstetric history with the repeated abortion case we have done and the success there is a very encouraging result. So she can take this Kasmari Ghrutta. If not available, she can take the Phalaghrutta with Subana Basandamalti Ras. Thank you, ma'am. There's the last question. Dr. Gauranka says, is Arogya Setu app helpful? Exactly. It is very, very helpful. Arogya Setu. Thank you. We are done with the questions, ma'am. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you once again. Thank you, madam. Namaste to all the viewers. And then I am very much thankful that giving me chance to share my thoughts. Thank you. Namaste. नहीं नहीं मैडम, लक्ष्मी मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप हमें मतलब इतना समय दिया है, आप इतना बिजी रहते हैं हमें पता है, तो फॉर दैट वी आर थैंक यू सो मच। Welcome, madam. नमस्ते लक्ष्मी मैडम। हाँ, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. हाँ ठीक है मैम। Thank you to your team, madam. थैंक यू मैडम। Thank you, Lakshmipriya ma'am, and thank you, Bharti ma'am. Moving onwards with our next speaker, I would like to share you a brief intro of respected Dr. Alok Sharma sir. He is retired Director IUS STMC, Director IAMT, Ayurvedic College, Meerut. Is working as Ayurvedic consultant in COVID ward, Ananda Hospital, Meerut. He has published many articles and has given a contribution in the field of Ayurveda. Today, here, Sir is with us to share his experience regarding the topic COVID-19 L2 level patient management by Ayurvedic Fundamental at Ananda Hospital, Meerut. I would like to welcome you, sir. Over to you, sir. Please proceed. क्या है अगर शुगर स्टाफ प्रिस्क्राइब कर रहे हो, क्या डोसेज है? खुशबू सर लेफ्ट हो गए? Yes, ma'am, sir has left. आई He was कॉल, trying to reach. मैं सर को कॉल करती हूँ। Sir has joined, ma'am. सर ज्वाइन हो गए, कोई बात नहीं। Sir, please continue, sir. Please proceed, sir. So please unmute yourself, sir. Alok, sir, please unmute yourself.
Sir, please unmute yourself so we can hear you. Khushbu, go ahead. एक क्वेश्चन पूछूं which Hello? is case है हेलो, ये हम लोग Sir, नॉर्मल yes, sir. हाँ सर, आवाज आ रहा है? Yes, sir. Now it's audible. करना बोले तो अगर करे तो क्या प्रॉब्लम हाँ, मैं बोल सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Please, please, please proceed, sir. हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों का। मेरे कुछ मेरा वीडियो थोड़ा करेंगे आप? मैं से करता हूँ यार। हेलो, Yes, sir. You are visible and audible as well, sir. Please मैं proceed. दिखा पा रहा हूँ जी, अगर वो कर देना आप तो शुरू होता हूँ मैं। हेलो, Yes, sir. मेरा दिखा सकते हैं मेरे को? लैपटॉप पे नहीं आ रहा हैगा। अब आगे ठीक। हेलो, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आज बहुत अधिक गौरवान्वित हूँ कि आज से 40 इयर्स पहले मैं एनआईए में कायिक चिकित्सा में एडमिशन लेने के लिए जयपुर आया था और आज 40 साल बाद मुझे एक अवसर मिल रहा हैगा, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं प्रवक्ता तो नहीं हूँ, प्रोफेसर भी नहीं हूँ और आप लोगों ने मुझे मौका दिया क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, चिकित्सक हूँ, उस नाते से अपनी बात शेयर करूँगा। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा जब यहाँ मेरठ में आनंद हॉस्पिटल आज टाइम बड़ा फेमस हो चुका हैगा, उसमें जब कोरोना वार्ड 100 बेड हमको अलॉटेड हुए गवर्नमेंट से और ये L2 लेवल का हॉस्पिटल था। इस L2 लेवल के हॉस्पिटल्स के लिए जब पेज अलॉटमेंट हो गया तो मैनेजमेंट ने कोरोना जो आनंद हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ने, जिसकी की चेयरमैन मानसी आनंद जी ने एक अनुरोध मेरे पास भेजा कि आप हमारे पेशेंट को उनकी इच्छा अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेशन देंगे। तो साधारणतः तो हमने देखा कि पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा कि एक प्रोटोकॉल अलॉट हुआ कि उस प्रोटोकॉल्स पे सब लोगों ने कार्य करा। हाँ, इंडिविजुअली ट्रीटमेंट की परमिशन हम लोगों को नहीं थी, एक परमिशन थी, मुश्किल थी हमारे लिए। पर हाँ, हमने देखा अगर हमें कोई मरीज ऑप्ट करता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहता है, तो हम उसको एड ऑन ट्रीटमेंट दे सकते हैंगे। ये सोच के एक चिकित्सा की शुरुआत करी गई, ट्रीटमेंट एड ऑन दिया गया था, बड़े अच्छे रिजल्ट रहे, ये मैं आपको शेयर करूँगा। मेरे सामने बड़ी समस्या ये आई थी कि जब कोरोना पेशेंट को कभी फिजिकली देखा नहीं था और हमको उनकी चिकित्सा भी करनी थी, एक समस्या थी, तो हमने एक तुरंत एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कोरोना आनंद के नाम से और उसमें कुछ चिकित्सक, डॉक्टर संजय जैन जो आनंद हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन है और बिल्कुल मेरे साथ साथ चलते हैंगे, उनका बहुत बड़ा वो था। उसके अलावा हरिमन चंदोला जी, सत्यनारायण डोरनाला, पूजा भारद्वाज, पूजा सब्बरवाल और शेट्टी और रवि गोगिया और आपके श्री राम, ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने लगातार हमें सपोर्ट दिया। इसके साथ कई और चिकित्सक हमको मिलते रहे क्योंकि मेरा ये वर्किंग जो था लगातार ग्रुप्स में शेयर हो रहा था कि मैं आनंद हॉस्पिटल में चिकित्सा कर रहा हूँ, तो मुझे कई अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने बहुत सलाह दी और इस सलाह में एक नाम और जोड़ा हमारे साथ, डॉक्टर मीरा सुधीर चेन्नई से। जी हाँ, मीरा सुधीर चेन्नई से। ये हमारा जो वर्क था आनंद हॉस्पिटल का केवल मेरा नहीं था, एक टीम का वर्क था। हमने हाइपोथेसिस बनाई, हमने सोचा, तब हम चिकित्सा पे आए, तभी हम आगे बढ़ पाए और ये इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट था। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट इसलिए कि हमने किसी भी पेशेंट का एलोपैथिक ट्रीटमेंट बंद नहीं करा था। हाँ, जब समस्या आई तो हम शुरू हो गए थे। मैं पहला आपको शेयर करूंगा। इस सबको शेयर करने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा कि हमने एक हाइपोथेसिस भी हमारे ग्रुप ने सोची थी, बनाई थी, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट के बारे में सोचा। हाँ, ये निश्चित है कि इसमें हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, हमने कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन उसको दिया, उसको नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हम जैसी पेशेंट की जरूरत पड़ रही थी वो ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे थे। अब आप सभी जानते हैं कि आगंतुक रोग, कोरोना जैसे कि आगंतुक रोग है, आप जनपद ध्वंस भी कह सकते हैं, आया तो कोरोना ही आएगा, वायरस आया आएगा और सबसे पहले पेंडेमिक के रूप में विश्व में फैल गया। अब हमारे सामने
पहले तो हम शुरू में बहुत सारे कार्य करते रहे आयुष क्वाथ के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, हालांकि इम्यूनिटी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब मैं इस मैदान में समुद्र में उतरा तो मालूम पड़ा कि इम्यूनिटी इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैगा कि सिंपली एक अश्वगंधा, शतावरी को थोड़े काल देने से या आयुष काल को थोड़े काल देने से एकदम से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती हैगी, क्योंकि इस बीच में मुझे भारतीय मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ना पड़ा, क्योंकि वो भी एक ट्रायल कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस में देखा गया कि कोई भी आगंतुक बाद में दोषज हो जाती है कि निश्चित रूप से दोषज आगंतुक मिल जाते हैं। जब तक दोष प्रकोपित नहीं होते हमारे शरीर में व्याधि नहीं होती है। और दोषों का प्रकोप के दो तरीके से होता है, एक चय प्रकोप होता है, एक संचय प्रकोप। मतलब एक बिना अच्छा प्रकोप होता है, उसमें चय की जरूरत, मतलब संचय नहीं होता है, एकदम से व्याधि का प्रकोप होता है। जैसे अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरा पित्त खुद को हो गया, मैंने अगर ओवर एक्सर्ट हुआ तो वात का प्रकोप हो गया। तो ये इसमें हमारा संचय नहीं था, एकदम से प्रकोप हुआ, क्योंकि पेंडेमिक था, वायरस आके हम पे इफेक्ट कर रहा था। अब ये जब प्रकोप होता था तो ये वात जो देखा गया, इसमें वात के लक्षण बहुत अधिक मिलते थे। एकदम से पेशेंट जो है ना डिफरेंट सिम्टम्स लेके चला आता था। आप ताज्जुब करेंगे कि इस चिकित्सा में मुझे एक अजीब सी परेशानी भी फेस करनी पड़ी। जो मैं हमारे धन्वंतरी जी महाराज का हाल हुआ था, कुछ मेरे दोस्त या रिलेटिव या मेरे जो नोन थे वो समझते ये थे कि मैं कोरोना वार्ड में हर समय राउंड लगाता हूँ, जबकि फिजिकली ऐसा नहीं था। मैं तो गूगल डीओ पे, व्हाट्सएप कॉल पे चिकित्सा करा करता था, सलाह दिया करता था। और इस सलाह के लिए ऑपरेट करने के लिए आपको ताज्जुब होगा, आनंद हॉस्पिटल ने हम लोगों की सलाह पर 3 हमारे आरएमओ, एक हमारे पूनम जिन्होंने ऋषिकुल से बीएमएस करा, एक दिवाकर जिन्होंने पातली से बीएमएस करा, एक डॉक्टर सचिन, ये 3 आरएमओ एक हाईली अच्छी सैलरी पर रखे और जिन्होंने दिल लगा के हमारा साथ दिया, क्योंकि बिना हम आरएमओ के अंदर पेशेंट में ट्रीटमेंट नहीं दे सकते थे। ये भी एक विशेष वजह से दूर रहा, क्योंकि टीम वर्क था, अकेला मेरा वर्क नहीं था। मैं बार बार शब्द का प्रयोग करूंगा। हाँ, ये ठीक है कि मैं ग्रुप को लीड कर रहा था, लेकर सब कुछ चल रहा था। तो आप देखिए कि इसमें वात का प्रकोप अनुलोम क्षय भी होता है, प्रतिलोम क्षय भी होता है, 2 तरह की वात व्याधियां होती रहेंगी। पर आप देखिए इसमें सबसे पहले आते ही हमारे फुफ्फुस, लंग्स प्रभावित होते हैंगे। तो लंग्स जब प्रभावित होते हैंगे तो वो क्षय दूसरा आएगा, एक प्रतिलोम क्षय दूसरा आएगा। प्रतिलोम क्षय के अंदर अपन वायु विगुणता से शुरुआत होती हैगी, तो निश्चित रूप से उसके अंदर पहले प्रतिलोम क्षय जब होगा। पर यहाँ अनुलोम क्षय की व्याधि मिल रही थी, तो अनुलोम क्षय में पहले प्राणवायु दूषित हो रही है, उसके बाद बाकी वायु दूषित हो रही है। 5 वायु दूषित होती है निश्चित रूप से, पर देखना पड़ता था कि कौन सी वायु दूषित से इसका व्यक्ति का प्रकोप हुआ है। ज्यादातर तो ये मेरे को अनुलोम क्षय में ही रोगी सारे मिलते थे। हाँ, डाटा अभी हम पूरा 600 पेशेंट में ट्रायल करे, 600 पेशेंट में मेडिसिन दिए। जनरली तो हमने सभी ने पेशेंट ने औषधियां ली, एड ऑन वर्ड में प्रयोग करूंगा विद एलोपैथी। पर कुछ पेशेंट में मेंशन करूंगा कि कैसे हमने उनको हाइपो मतलब शुरुआत करी। आपको एक मैं चीज शेयर करूंगा, देखिएगा इसमें सबसे बड़ा एक आप देखिएगा, मैं पंचकर्म नहीं पंच भौतिक चिकित्सा दाता शास्त्री जी का पढ़ रहा था। इस टाइम में मुझे पढ़ना भी काफी पड़ा, तो उस पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया, मतलब उन्होंने व्याख्या दी जो मुझे बड़ी आत्मसात हुई कि रक्त धातु से साधारण शरीर के काफी अवयवों की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। तो आप देखिएगा रक्त धातु की इसमें दूसरी सबसे अधिक होती है। जब भी हम कोरोना का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी जरूरत पड़ता रहेगा। अब ये रक्त धातु से आप देखिएगा, बड़ा ताज्जुब आपको आश्चर्य होगा कि ये उत्पत्ति का प्रधान घटक माना गया है। अब इससे ही रक्त धातु से हमारे फुफ्फुस की उत्पत्ति भी हो रही है, रक्त धातु से हमारा यकृत भी बनना है, रक्त धातु से प्लीहा भी बनना है, रक्त धातु से गुदा, वस्ती, हृदय, जिह्वा, इन सब का निर्माण, वृक्क का निर्माण, वृषण का निर्माण, इन सब के निर्माण में रक्त धातु का बड़ा रोल होता है। तो आप देखिए रक्त धातु दुष्टि के कारण से आप जितने भी सिम्टम कोरोना के देखेंगे, जो कोरोना के नए नए सिम्टम आते रहते हैंगे, तो वो सब रक्त धातु की वजह से ही आए थे। ये मेरी हाइपोथेसिस थी। हो सकता है आप मेरे मत से सहमत ना हो, अपना मंतव्य दें। क्या हम रक्त रोग की चिकित्सक इसमें कार्य कर सकते हैं? ये मेरे विचार है, निश्चित नहीं है, मैं सोचता हूँ जो है। अब आप देखिएगा इसमें स्रोतस हमारे इसमें प्राणव्यय, रसव्यय और रक्तव्यय, 3 स्रोतस मेन इन्वॉल्व हमने देखे जो रोगियों में। मैं क्लिनिकली
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुकिश नॉलेज में नहीं दे रहा हूँ। चरक शास्त्रों में सब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा रहेगा। बेटर रहेगा कि जो मैंने सोचा, जो मेरे ग्रुप ने सोचा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, प्राणवसो तो दुष्टि, उसमें देखिएगा श्वास की गति में वृद्धि 6, श्वासावरोध, श्वास कष्टता, सशूल श्वास, श्वास, ये लिखा हैगा। तो आप देखिए कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेज हमारे पास आए, और इसमें हमने मोस्टली L2 लेवल में ही मेडिसिन ट्रीटमेंट करा, स्पेसिफिक। जनरल ट्रीटमेंट तो ठीक है कि एक दे दिया, खांसी जुकाम अलग बात थी जो हैगा। तो L2 लेवल में सभी में प्राणवसो तो दुष्टि मिली, और यहीं पे हमारा आयुर्वेदिक का यह मेरा अनुभव इसमें चिकित्सा का बन पाया, वो अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। दूसरा मैंने कहा इसमें रसवय स्रोतस की दृष्टि। अब रसमय स्रोतस में आप देखेंगे रोज कोरोना के अंदर नए नए सिम्टम्स आते जा रहे हैं। आपने सुना था कि साहब मुंह से स्वाद नहीं आता, नाक से स्मेल नहीं आती। अब आप देखिए हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी रसवय स्रोतस दृष्टि के लक्षण का लेके अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरस्य, अर्सज्ञता, हृल्लास, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, पांडु, श्रोतोरोध, शरीर में शिथिलता, कार्श्य, अनिद्रा। आप इसमें से देखिए कि कितने रोगी कोरोना के पेशेंट में मिलते हैं। हाँ, सभी में सभी रोगियों में सारे सिम्टम नहीं मिलते, बस किसी में कुछ है, बस किसी में कुछ है। पर मुझे तो लगा नहीं कि एक भी सिम्टम रसवय स्रोतो दृष्टि से बाहर गया हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है रक्तवय स्रोतस। मैंने क्यों मेंशन करा, रक्तवय स्रोतस को मैंने क्यों पकड़ा? इसके अंदर मोस्टली पेशेंट में मुझे मुखपाक, जी हाँ, मुखपाक, स्टोमेटाइटिस, मुंह के छाले, मुंह में अल्सर, मुंह का स्वाद कड़वा, ये मुझे बहुत मिलता था। तो इसके कारण से मैंने 3 स्रोतस चिकित्सा के दृष्टिकोण से पकड़े। अब आप कहेंगे कि निराम व्याधि है कि साम व्याधि है? देखिए, हम चिकित्सा करने चलेंगे, पहले हमें चिंतन तो करना पड़ेगा कि किस दोष से व्याधि होती है। मेरे दृष्टिकोण से ये साम व्याधि थी, क्योंकि इसके अंदर श्रोतोरोध, बलभ्रंश का नाश, गौरव, अल्प मतलब वात का, शरीर में पेट में वायु गैस नहीं घूम रही है, आलस्य, भूख न लगना, मल संग, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण मैं करूंगा, मल संग, अरुचि, क्लम, ये इन सब रोगियों में देखने को मिले। ये मैं लक्षण क्यों मेंशन कर रहा हूं कि मुझे इन लक्षणों के अनुसार ही, अब आप कहेंगे कि साहब इसकी संप्राप्ति क्या बनेगी? रियली हम संप्राप्ति इसकी नहीं बना पाए। हालांकि हमारे जयपुर NIA के व्यक्तित्व विज्ञान की PG है, उन्होंने संप्राप्ति बना के भी भेजी थी। पर हमने जब देखा कि संप्राप्ति के बेसिस पे हम चिकित्सा करने में होते, क्योंकि इसमें नहीं हो पा रहे थे, कई हर पेशेंट में अलग एंगल से ट्रीटमेंट करना पड़ता था। हर एंगल की थी, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग थी, तो हमें कोई प्रोटोकॉल यूज तो करा नहीं था। तो जैसी हमें आवश्यकता पड़ी वही औषधि हम प्रयोग करते रहे। मैं औषधि में आपसे शेयर करूंगा, और मैं औषधि वही प्रयोग करूंगा जो मैंने अनुभूत करी थी, और क्यों करी थी ये भी शेयर करूंगा। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हैगा। आज अगर हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह था कि साहब हम चिकित्सा कैसे करें, आपके लिए एक बहुत अच्छा कि आज आपने पहली वेबिनार आयोजित करी, कि इसके अंतर्गत आपने प्रसूति स्त्री रोग में पहली वेबिनार आयोजित करी। और मेरे लिए बड़ी गौरव की बात यह है, मैं NIA प्रसूति रोग में तो आ ही रहा हूं, पर आनंद हॉस्पिटल एक इंडिया का पहला एकमात्र हॉस्पिटल था जहां पेशेंट को इंटीग्रेटेड मेडिसिन ईमानदारी से, सच्चाई से दी गई। और आनंद हॉस्पिटल के अंदर ताज्जुब होगा, शुरुआत में हम लोगों ने जब आनंद हॉस्पिटल को L2 लेवल का कैटेगराइजेशन गवर्नमेंट से अलॉट नहीं हुआ था, तो उस समय आपको ताज्जुब होगा कि यह वैद्य श्री राम जालौर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, राजस्थान के ग्रेजुएट हैंगे। और मेरा एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, वैश्यशाला ग्रुप, और उसमें हमारी मोस्टली डिबेट इसी पे चला करती है, शास्त्रीय विधान चला करते हैं, हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैंगे। तो श्री राम जी ने बीकानेर से, उस समय जब ये मार्च अप्रैल के महीने की बात है, हमारे पास ये आया कि सब ये काढ़ा सभी पेशेंट को देना है। तो एक काढ़ा जो बीकानेर में बड़ा इजीली सारे लोग पी रहे हैं, और वही काढ़ा हमारे को, उसमें गिलोय, मुलेठी, भारंगी, तालिश पत्र, सुदर्शन चूर्ण, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, सौंठ, पिपली, तुलसी, पंचांग, कंटकारी, ये पड़े थी। और इन काढ़े को विधिवत रूप से कोरोना हमारे को वार्ड अलॉट नहीं हुआ था, उससे पहले ही आनंद हॉस्पिटल के सारे पेशेंट को ये चीज पानी शुरू कर दी कोरोना, और आनंद हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया। और आपके ताज्जुब होगा कि एक भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुआ था। ये शुरुआत हमने पहले ही कर दी थी। इस बीच में क्या हुआ कि मैं IMT आयुर्वेदिक कॉलेज का डायरेक्टर भी हूँ, तो एक ऋषि काढ़ा इसी मकसद से
हमने वहाँ से IMT यूनिवर्सिटी से बनवाया, क्योंकि हमारे पास फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, कंप्लीट यूनिवर्सिटी, सब चीज़ें सुविधाएं, हमारे पास बहुत बड़ा एक हर्बल गार्डन भी है, जो वनस्पतियाँ पैदा होती हैं केवल, और हर्बल प्लांट बेचे भी जाते हैं। तो उनसे एक हमने हर्बल काढ़ा बनाया, उसके हमने टी बैग बनाए, क्योंकि वो फांट रूप में प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा था, उसकी एफिकेसी भी देखी और हमको बहुत अच्छी वो मिला, और हमारे सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं। ये काढ़ा और ऋषि काढ़ा, ये दोनों चीजें बहुत आराम से यूज करी जा रही थी हमारे पहले से जो है। पर आप देखिएगा, जो पेशेंट, जैसे ही हमको ये आनंद हॉस्पिटल को कोरोना वार्ड मिला, जो पेशेंट वहां आ रहे थे, हमने शुरुआत में वहां पे, आपको ताज्जुब होगा कि मैं शांति कुंज से भी जुड़ा हुआ हूं, तो शांति कुंज के व्यवस्थापक के द्वारा हमने एक हवन कोरोना वार्ड में आनंद हॉस्टल में होस्ट करा। सारे लोग, डॉक्टर्स भी और मैनेजमेंट भी अपनी पीपी किट पहन के वो कोविड वार्ड में बैठे, उन रोगियों के बीच में हवन करा, और ये कोरोना नाशक हवन सामग्री भी शांति कुंज बना रखी गई, और अथर्ववेद के जो कीटाणु नाशक मंत्र हैं उनके ऊपर ये हवन करा गया। आज आनंद हॉस्पिटल अंदर आपको ताज्जुब होगा, लगातार स्वास्थ्य का वाचन, गायत्री मंत्र का वाचन लगातार चलता रहता है, और नवरात्रों के अंदर लगातार हवन की प्रक्रिया भी वहां पे अंदर करी गई, धूपन के रूप में, जिसको धूपन बड़े प्रयोग करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली वहां पे करा गया। अब चलिए हम आते हैं पेशेंट्स के ऊपर, अब उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने बहुत कुछ सुन लिया। जब शुरू शुरू में हम लोग आनंद हॉस्पिटल चले, तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आई थी कि तुरंत मेरे पास वहां से मैसेज आया कि सच सच ऐसा इस टाइप के केसेज हैं, और इतना डी डाइमर बढ़ा हुआ है, इतना इसका फेरेटिन लेवल बढ़ा हुआ है, ये ITL बढ़ा हुआ है, ये CT स्कोर रहेगा। और ये शब्द पहली बार सुनने को हमको मिले थे, कोई हमारे लिए बहुत नोन वर्ड नहीं थे। और एकदम से साहब बहुत कोई तेज औषधि दो, एंटीवायरल दो, इस तरह की डिमांड जब वहां से आई, तो रियली एंटीवायरल शब्द तो आयुर्वेद में कहीं है ही नहीं, और रियली हम बहुत बड़ी अगर गलती करेंगे अगर हम एंटीवायरल के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो हमको अपनी सिद्धांतों पे, अपने दोषों पे सोचना चाहिए, कि ना कि उनकी एंटीवायरल के थ्योरी के अंदर। वो ये जो थोड़ी कि हम जो वो लोग यूज करते हैं वही लोग हम यूज करेंगे जो है। अब एंटीवायरल की सर्च करो साहब, मैंने कहा एंटीवायरल तो हमारे पास नहीं है, अब हम करें तो क्या करें। तो पहला रोगी एक मिला, एक लेडी डॉक्टर थी, उनकी मदर को सांस के मतलब डिस्निया की प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी, ऑक्सीजन लेवल जो स्टेबल नहीं बन रहा था। तो वहां से फोन आया कि डॉक्टर साहब, शुरू में एकदम से हमें हाथ रखने का मौका नहीं मिला था, धीरे धीरे हमने जब हाथ मतलब दिखाया अनुभव, तभी हमें कोई इज्जत मिली थी, ऐसा नहीं कि बिना काम करे मौका मिला था जो है। तो मैंने जब एकदम से आया, देखिए मेरा भी कोई इतना वो नहीं, क्योंकि आज आयुर्वेद से हम लोगों से एविडेंस मेडिसिन मांगी जाती है। अरे कोरोना ही अभी 6-8 महीने से आया, उस पर एविडेंस मेडिसिन ऐसे बन जाएगी। आज कोरोना में अंदर कौन सी एलोपैथी के अंदर मेडिसिन है कि जो एविडेंस बेस्ड है। और एविडेंस बेस्ड की बात तो वो करें, हमारे शास्त्रीय एविडेंस बेस्ड है, हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने सारी औषधि एविडेंस बेस्ड लिखी जाएंगी, तो हमें कौन सी उनकी ट्रायल की जरूरत है कि साहब बिना उनके प्रयोग करेंगे। हमें अपने शास्त्रों में आस्था रखनी चाहिए, कि शास्त्रों को देखना चाहिएगा, तो जो हमने देखा हमने वो प्रयोग करा। तो अब आप देखिएगा फेरेटिन लेवल राइज साहब, अब फेरेटिन लेवल के लिए आप अपनी मेडिसिन दीजिएगा, डी डाइमर राइज साहब। अब फेरेटिन लेवल में मैंने क्या देखा, मेरे को क्लू क्या मिला कि साहब इसमें जो ब्लड की जो है, RBC की जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पुअर हो जाती है। RBC तो है, बढ़ भी गए, पर उसकी ऑक्सीजन वो अपने टर्मिनल तक नहीं ले जा रहे हैं। डी डाइमर है, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है बॉडी के अंदर। इंफ्लेमेटरी प्रोसेस में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चरक सूत्र स्थान में लिखा है नार्ति शोथ पित्ता, कोई भी शोथ बिना पित्त के नहीं होता है, तो क्या शोथ इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो क्या हमें पित्त की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं उन शब्दों पे, बड़े बड़े अंग्रेजी शब्दों पे शुरू में एक बार तो झटका लगा, पर जो पढ़ा समझा, और डॉक्टर संजय जैन ने मुझे जो हेल्प करा कि यार ये जो है ना, ये टेस्ट नहीं हैंगे, ये तो मार्कर्स हैं, कोरोना के मार्कर्स हैं। तो एकदम से रिवर्स लगा, यार ये टेस्ट नहीं है कोरोना के मार्कर्स हैं। आप कहेंगे मार्कर से फिर और क्लैरिटी मिली। मेरे पे कुछ पेशेंट आते थे, आजकल मैं ऑनलाइन ज्यादा पेशेंट देखता हूँ, तो वो एक पेशेंट में उन्होंने सारे मार्कर्स के टेस्ट, CT के वगैरह सब टेस्ट करा रखे हैं। तो और उसको वो लेडी आके बोलती है कि साहब मेरे को तो कोरोना हो गया, और बड़े आके मेरे सामने बैठ गई। अब मैं देखूँ यार ये कोरोना हो गया, मास्क नहीं, क्यों मुझसे मिलने चली और आ भी गई घर वो जो है। तो
अब आप देखिए उसको कोरोना नहीं हुआ था, पर उसके सारे टेस्ट वो वाले हो रखे थे। देखिए मार्केट हो चुका है टेस्ट कराने का, इसका करने का। टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट का भी डिनायल नहीं है, बिना टेस्ट के आगे नहीं चल सकते कि हम आइडेंटिफिकेशन होता रहेगा। हम कोरोना को बिना चेहरा देख के नहीं बोल सकते एक दिन साहब इसको कोरोना पॉजिटिव निगेटिव में। टेस्ट की अति आवश्यकता होने चाहिए थे, पर वो इतना एक पेनिक कंडीशन बन गई इसके नाम पे। एक मीडिया ने हमारे इतना पेनिक कंडीशन बना दी, क्योंकि आपने अब चरक में ही लिखा है विषाद रोग वर्धन नाम। तो इस डिप्रेशन के कारण से, विषाद के कारण से ये कोरोना के सिम्टम हर रोगी में इतने बढ़ते हुए चले आए कि इतना भय बन गया था कि डर के मारे हवा खराब। अब हम ले चलते हैं आपको अपने वार्ड में, क्योंकि ये सब शास्त्रीय की बात तो कर दी। अब पहला रोगी उसके ऑक्सीजन लेवल ठीक है, फेरिटिन भी बढ़ा हुआ, डी डायमर भी बढ़ा हुआ है, सब बढ़ा हुआ है। उसका ऑक्सीजन लेवल जो है सब फिक्स नहीं हो रहा है। उसको बार बार कभी 8 लीटर से, कभी 6 लीटर, कभी 5 लीटर, कभी 4 लीटर, 2 आ गए, और उसके बाद फिर 3-4 पे फिर ऑक्सीजन देने पड़ रहा है। वो चल रहा है तो सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन लेवल स्टेबल है, चलने पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, बैठने पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम हमारे सामने आई, तो शुरू में तो नेचुला ताली शादी वही हमारा आयुर्वेदिक वालों का सबके पास होता है हथियार, अभ्रक भस यूज करी, निश्चित रूप से अभ्रक यूज करी, सोपड़ी अभ्रक यूज करी, ताली शादी दिया, चौसे परी पिपली यूज करा, पर उसके लेने के बाद तो थोड़ा आराम मिले, फिर चलने से उस पर सांस होने लगे, फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। तो सडनली एक मुझे एक वो आया कि यार क्यों नहीं हम इसका जो है ना, अब शाली शास्त्री पिंड श्वेत की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर आप लोग मेरी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि पर आप सोचिए कि मैं आनंद हॉस्पिटल के आईसीयू में काम कर रहा हूँ, जहां मेरी एंट्री नहीं है। मेरे बीएमएस जो आरएमओ बेचारे मेरे लिए, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर प्रजापति या डॉक्टर सचिन काम कर रहे हैं मेरे लिए, वो लोग काम कर रहे थे। तो अब वहाँ शाली शास्त्री पिंड श्वेत की व्यवस्था नहीं हो सकती थी निश्चित रूप से, क्योंकि उस हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल भी है और पेशेंट को बड़ा ऑकवर्ड भी लगता था। तो एक युक्ति निकाली गई, जुगाड़ निकाला गया, आपको ताज्जुब होगा। जुगाड़ क्या निकाला गया कि अब मैंने कहा सरसों का तेल नमक गर्म करके करा जाए, तो वो अगेन प्रॉब्लम, क्योंकि वो किचन मैस वगैरह अलग, वार्ड में कुछ था नहीं जो है गर्म करने की व्यवस्था। तो फाइनली एक चीज हमने जुगाड़ करा गया, सेंधवादी तेल। सेंधवादी तेल को हल्का पानी में रख के गर्म करा के, हीटर व गीजर का पानी लिया, उसमें गर्म करा करके और छाती और कमर पे लगवाया गया। और सिकाई के लिए हमने वहां पे इंफ्रारेड लैंप मंगाया, क्योंकि देखिए आप मेरी आलोचना खूब कर सकते हैं, पर ये सोचिए कि मैं आनंद हॉस्पिटल के आईसीयू में घर बैठे काम कर रहा हूं, मुझे वो सब व्यवस्थाएं सोचनी है, करनी है और रिजल्ट भी देने हैं। आप ताज्जुब करेंगे, पहले ही महिला रोगी थी वो, इमीडिएटली आप सोचिएगा कि उसका ऑक्सीजन लेवल नेक्स्ट डे उसको ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ी। अभी मेरे शब्द ध्यान देखना, नेक्स्ट डे उसको ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ी, जो लगातार ऑक्सीजन के बिना रह नहीं पा रही थी। इससे हमारा जोश तो बहुत बढ़ गया कि यार ये तो बहुत अच्छा काम करता है। अब आप कहेंगे साहब आपने औरों में पंचकर्मा क्यों नहीं कराया? देखिए पंचकर्मा कराने के लिए आपको दोष तो जीर्ण चाहिए, यहाँ तो दोष जीर्ण थे नहीं, अचय प्रकोप था, संचय नहीं था, यहाँ पे अचय प्रकोप था दोष का जो है। तो पंचकर्म यहाँ आवश्यक नहीं है, यहाँ शमन चिकित्सा आवश्यकता थी। हाँ, ये स्नेह सदन तो इसलिए कराया कि लंग्स के अंदर शाली शास्त्री पिंड जो काम करता है उतना अच्छा काम तो नहीं करेगा, पर कुछ तो काम करेगा। तो लेके हमने इस थ्योरी पे इस कार्य को करा। अब हमें आनंद हॉस्पिटल में शुरुआत में हम डे बाय डे चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन सबको देना मस्त था, पेंडेमिक एक्ट था, डॉक्टर्स को देना भी ड्यूटी बनता था, गलत बात नहीं थी, मैं उसका विरोध नहीं करूँ। पर क्या होता था, वो 20-20 गोली जो खाते थे, एंटीवायरल भी खा रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल भी खा रहे हैं, क्लोरोक्विन भी खा रहे हैं, और उसके बाद उनको हैवी डाइट, क्योंकि देखिए आनंद हॉस्पिटल पेड हॉस्पिटल था, लोग पेमेंट करते थे, आते थे तो अच्छा, सुबह को उनको आलू पूरी का नाश्ता, दोपहर में दाल मखनी और राजमा छोले इस टाइप का, और वो रोगी आराम से खाते थे। अब उसमें क्या हुआ, एक तो वो लेटे हुए हैं, प्लस वो डिप्रेशन में है, डरे हुए भी बहुत हैं। अच्छा खाना हुआ, भाई साहब के पेट खराब होने लगे, भाई साहब बहन जी जो भी थे उन लोगों के पेट खराब होने लगे, और मलबद्धता इतनी भयंकर रूप से मुझे मिलने लगी कि फिर समस्या हो गई। अब मैंने सोचा अगर अपान वायु विगुणता रहेगी तो प्राणवायु को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें ऑक्सीजन तो हम नहीं जानते, ऑक्सीजन जानने की हमें इच्छा भी नहीं है, पर हम प्राणवायु तो जानते हैं। हमें प्राणवायु को मैनेज करना था कि प्राणवायु अपने कार्य समग्र प्रकार से कर ले। तो उसके लिए हम अपान वायु विगुणता के लिए जो है हमने
क्या करा कि हिंगवास्तक चूर्ण भोजन से पूर्व सबको दिया, देसी घी मिला के पहले गस्से से, एक बार। दूसरा काम जो हमने वहां पे करा कि जो खास तौर से जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे थे उनकी इनिशियली डाइट हमने लाइट करा दी। रोटी, लौकी, तोरी, मूंग की दाल, दलिया इस पे ले आए। शुरू में तो हमें कुछ पेशेंट के घर से मंगाना पड़ा क्योंकि इतना जल्दी मैस में अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। और बाद में डॉक्टर संजय जैन ने इतना अच्छा वो करा कि साहब रोटी, गाय के देसी घी लगी हुई छुपड़ी हुई और नहीं लौकी सब्जी तोरी, यही खाना उनको मिलने लगा। क्योंकि मैंने कहा लगातार लेटे रहते हैं डिप्रेशन में, इनकी तो मलबत्ता होनी ही होनी, और मलबत्ता पालन बिगड़ता तो प्राणवायु कैसे हम ठीक कर पाएंगे। प्राणवायु ऑक्सीजन लेवल है, हमें ऑक्सीजन लेवल पे अटैक करना था, ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करना था। और जितना जल्दी हम ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल कर लें उतनी पेशेंट की रिकवरी हेल्दी थी। और अगर जितना डिलेड हो रहा है तो उसको फिर आगे जाता। और आपको ताज्जुब होगा, इन 600 पेशेंट में से आज तक आनंद हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की, एक रोगी की डेथ नहीं हुई, व्यक्ति रेफर नहीं हुआ, वहां का स्टाफ कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। एक गलती से आपको बता दें, आज मैं बड़े आराम से मीडिया में, पेपर में बहुत पढ़ता हूँ, फेसबुक पे, कि साहब हमारे रोगी दवाई ये दी और इतने दिन में वो निगेटिव हो गया। बड़ा ताज्जुब होता था। हमारा भी एक वो था, उसको विद इन 3 डे कोरोना निगेटिव हो गया। अब उसमें क्या था, अगर आप टेस्ट कराने की सुविधा है, टेस्ट करा सकते हैं, अगर आप इतने कैपेबल हैं, वो खर्चा बेयर कर सकते हैं, या कोई सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो वो तो 3 दिन में निगेटिव हो गया। अभी मैंने एक डाला था फेसबुक पे, एक बीकानेर का ही रोगी था, क्योंकि आजकल मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ से रोगी इसलिए संपर्क कर लेते हैं आनंद। और जैसे कि हमारे डॉक्टर भारती कुमारन मंगलम ने मुझे कांटेक्ट करा, ऐसे मुझे बहुत लोग कर लेते हैं। बीकानेर में रोगी था, गंगानगर में पेशेंट था, और एनआईए का पीजी था, बेसिक प्रिंसिपल का, उसका कोई कजन ब्रदर था। साहब डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए क्या करना है, और उनको बीकानेर ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने वो कर दिया है। अब विद इन 3 डे वो रिलीव हो गया। पर आप उसको एक बात समझ लीजिए, वो कोरोना निगेटिव हुआ था, ठीक नहीं हुआ था। उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही थी। वही इक्वली प्रॉब्लम वही आनंद हॉस्पिटल में ये हर जगह पड़ सकती थी कि नेगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, 9 दिन बाद टेस्ट करना है, नेगेटिव हुआ डिस्चार्ज कर दिया। पर हमने ये कोई मैजिक नहीं कर सकते कि सब 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कोरोना नेगेटिव कर दिया। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वायरल इन्फेक्शन जस्ट लाइक फ्लू है। क्यों इतने हम पैनिक बनते हैं? ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसको ढंग से कंट्रोल करना है, पर हम एंटीवायरल चलेंगे ही क्यों? अब आप देखिएगा, हवन ने भी हमारा उतना काम करा। अब आप देखिए, जो पेशेंट कोरोना नेगेटिव होते हैं, मेरा आज का एक्सपीरियंस ही आएगा, पिछले 2 महीने से तो मैं लगातार इसी काम में लगा हुआ हूँ, कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम लेके बाहर जा रहे हैं। पर उस बीच में एक अच्छा ही बात हुई कि जो पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो इतने इंप्रेस हुए कि साहब हमारी डायबिटीज भी इतनी, शुगर भी इतनी बढ़ रही है, हमारे क्रिएटिन भी इतना बढ़ रहा है, हमें इसकी चिकित्सा ही बताओ। अरे मैंने कहा भाई, निगेटिव होकर बाहर आ जाओ, ये सब चिकित्सा वहां 9 दिन में नहीं आएंगी। वहां तो निगेटिव होकर तुम्हें क्वारंटाइन पे रहना, तुम्हें बाहर आना है। अगर कोई ऐसा हुआ नहीं है कि साहब बिल्कुल तुम एकदम से बाहर आ जाओ। तो ये सब ट्रायल्स हमने जो वहां पे करे, इसने हमें जो अनुभव दिया। और आप देखिएगा, मलबद्धता में रोगी लेटा हुआ है, बड़ी समस्या हो रही है। आप कहेंगे शास्त्रों में कहाँ लिखा, रियल शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर मेरा अनुभव है, मैं बोल रहा हूँ, आपको पसंद आया यूज करें। मैं अपनी वही चीजें बोल रहा हूँ जो मैंने क्लिनिकली एक्सपीरियंस करी थी, क्योंकि मैं क्लिनिशियन हूँ। बड़े गर्व से कहना कि जो चीज स्वामी जी ने मुझे बताई थी, एक थोड़ा रेफरेंस मैं शुरू में देना भूल गया। जब मैं जयपुर में आया था एमडी करने के लिए 1980 में, प्रोफेसर राम प्रकाश स्वामी, जिनको मैं, मेरे गुरु हैं, थे नहीं, मैं थे उपयोग नहीं करता, उन्होंने एक चीज मुझसे पूछी थी, आलोक बाबू तुम एमडी करने क्यों आए? मैंने कहा जी अब ऐसा है कि एमडी करने इसलिए आए हैं कि कर लेंगे तो अपने बोर्ड पे अगर नौकरी नहीं लगी तो नौकरी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और बोर्ड पे लिखना होगा कि एमडी करेगा तो पेशेंट इंप्रेस हो जाएगा। तो उन्होंने एक शिक्षा मुझे दी थी जो मुझे आज तक, मेरी चोटी में गांठ तो नहीं है, चोटी तो नहीं है, पर मैंने गांठ बांध ली थी कि आलोक बाबू अगर सिर्फ इसलिए एमडी करने आया तो तुम वापिस चले जाओ, 3 साल तुम बेकार करोगे। और अगर तुमने ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कहना ना पड़े कि तुमने पीजी करा है, तुमको ये ना कहना पड़े कि तुम एनआईए में आए थे, तुमको ये ना कहना पड़े कि मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे, और लोग तुमसे प्रभावित हो, तुम्हारी डिमांड हो, लोग तुमको पूछें, तब तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। वो गांठ बंदी भी थी, आज तक मैं लेके आया हूँ। और वही हुआ कि आज आनंद हॉस्पिटल में काम करा, हमारी भारती जी के पास कहीं तक की सुगंध पहुंची, और उन्होंने मुझे कॉल करा, स्वामी जी की बात पूरी हुई। मैं तो नतमस्तक दोनों के लिए हूँ, अपने महाराज स्वामी जी के लिए, जो आज तक मुझे हर जगह आशीर्वाद देते थे, गाइड करते थे। उन्होंने कभी नहीं, मैंने जब जयपुर में मैं एमडी कर रहा था, आपको शायद थोड़ा सा मैं बैक में ले जाता हूँ,
तो उस जमाने में हमारी केवल कायिक चिकित्सा की 5 सीट थी 1980 में जब मैं गया था। तो इस शुरुआत का था, कुछ मॉडिफिकेशन का काल था। तो उस समय मैंने थीसिस ली थी एंजाइना पेक्टोरिस पर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेरे को गाइड थे। तो बड़ा स्वामी जी जैसे कट्टर आयुर्वेदिक उधर से ऐसा माहौल हम लेके चले थे। तो उन्होंने कहा थी बेटा तुम्हें करने की परमिशन पूरी है, तुम कुछ भी यूज करो पर आयुर्वेदिक सिद्धांतों को मत छोड़ना, उसके अलावा तुम जो कुछ करोगे अच्छा लगेगा, और जब तक वो थीसिस तुम्हारी इस चीज को पूरी नहीं करेगी मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। तो वो जो उन्होंने दर्शन हमको दिया, वो जो बेसिक हमको दिया, वो आज तक हमने आनंद हॉस्पिटल में ट्राई करा। मैं एंटीवायरल को सोचता ही नहीं, मैं लंबी चौड़ी बातें सोचता ही नहीं, कैसे दोषों को ठीक कर सकूं, कैसे स्रोतस को ठीक कर सकूं, कैसे अग्नि को ठीक कर सकूं। अब आप देखिए मलबत्ता में सीवियर कॉन्स्टिपेशन, एक बार तो आया कि मात्रा वस्ती चू कर दें, वहां पे जो कम से कम कुछ तो रिलीफ मिलेगा। इतना हार्ड स्टूल मुश्किल 5 दिन 6 दिन, और उसके बाद मुंह में छाले और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कैसे आप ऑक्सीजन स्टेबल करेंगे? इम्पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेबल करेंगे, ऊपर से हैवी डाइट। तो उन केसेज में मैंने हिंगवास्टिक चूर्ण तो भोजन से प्रूफ दिया ही दिया, तब साथ में रात को कैस्ट्रॉल 2 चम्मच, और एक काम और करा, वही जो छाती और कमर पे मैं तेल की मालिश और सिकाई कराता, सेम पैटर्न मैंने उसके पेट में भी करा दिया, क्योंकि पेट में कराने से कुछ तो मोबिलिटी आई, कुछ तो मोशन हुआ। और उसके बाद जब उन लोगों का पेट साफ होने लगा, उसके बाद जो उन पेशेंट में ऑक्सीजन स्टेबिलिटी बनी, तो रियली एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो एक्सपीरियंस ही मुझे उस एलोपैथ के साथ साथ जोड़ दिया मुझे, कि आज मैं उस मार्केट में खड़ा हूँ। मैं आप इक्वली देखिएगा, मैं IMT आयुर्वेदिक कॉलेज में भी ओपीडी कर रहा हूँ। आपको ताज्जुब हुआ कि लोग आज कोरोना पीरियड में पेशेंट नहीं देखते हैंगे, आज मैं कोरोना पीरियड में ही शांति कुंज में जाके एक कैंप भी कर देता हूँ खुलेआम आराम से जुएगा। मैं भी 65 प्लस हो चुका हूँ। पर ये सब कारण मुझे बड़ी हिम्मत देती हैं, क्योंकि मुझे डरा नहीं कि यार जो होना है सो होना है। हाँ, नशे भी मैं करता हूँ अपने आप, अणु तेल का वो भी करता हूँ, घर में धूपन भी करता हूँ। आप ताज्जुब होंगे, एक धूप बत्ती है, उसमें गाय के गोबर से, सिर्फ देशी गाय के गोबर से, ब्रिज शांति कुंज में मैं जाता हूँ, वहां से बनी हुई है। उसमें लोबान, गुग्गुल, कपूर और आपका जितने भी सौगंधित द्रव्य हैं, जटामांस, ये सब उसमें पड़े, और इतना क्लासिकल धूपन करता है कि रियली आपका टाइज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो ये छोटे छोटे उपाय हमने आनंद हॉस्पिटल में करे, मैंने अपने पेशेंट को भी सजेस्ट करे, अपने पे भी यूज करे। तो ये चिकित्सा अगर हम करते हैं और ये क्लिनिकल बेस्ड, और जब तक हम शास्त्र को अगर हम छोड़ देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं थोड़ी सी औषधि भी आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक औषधीय प्रयोग में मैं ना लेना चाहूंगा। एक चीज इसमें और देखिएगा, फेरेटिन लेवल का एक वर्णन और आया था। फेरेटिन लेवल ने मुझे बड़ा प्रॉब्लम डाल दिया था कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं आएगी जो है। तो उसमें आप देखिएगा, पांडु एक 6 जन्य होता है, एक अवरोध जन्य होता है। तो मैंने फेरेटिन लेवल का जो था बढ़ा हुआ, उसको पांडु में धातु शैथिल्य में 6 जन्य में लिया, उस ढंग से उसकी चिकित्सा करने की कोशिश करी। आप कहेंगे साहब पांडु में क्या चिकित्सा कर दी? मैं इसके लिए पांडु रोग में पहुंच गया सर। रियली एक जामनगर की थीसिस हैगी पांडु के ऊपर, अगर आप ध्यान हो तो उस थीसिस को मैंने पढ़ा था। थीसिस की वो पब्लिकेशन है, वो मेरे पास बुकलेट है, पढ़ा था। और एक गोविंद छांगाणी नागपुर वाले जो है, एक बार हम लोग एक नेपाल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उनकी फ्लाइट, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, एक दिन होटल में रुकना पड़ा। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा संदर्भ दिया था, आंवले का प्रयोग से साथ रिकवर हो जाता है। तो मैंने सिर्फ आंवल की रसायन इन रोगों पे मुक्त से प्रयोग करा है। कारण है क्योंकि आंवली पित्तशामक भी है, आंवली शोथग्न भी है, आंवली रसायन भी है। तो अब आप देखिए, जो बच्चे मेरे RMO जो BMS काम कर रहे हैं, वो मुझसे हर चीज शेयर करते हैं, और उनको एक ही फीस मिली हुई है कि बेटा आप मुझसे शेयर करो कि इसका औषधि का कैसे काम करेगा, किस ढंग से काम करेगा, कब तक काम करेगा। तो उस लड़की ने, पूनम ने पूछा, सर ये बताइए आप च्यवनप्राश क्यों नहीं दे रहे, आंवल की रसायन क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा बेटा प्रश्न तुम्हारा सही है, पर च्यवनप्राश में अग्नि मांद्य नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सारे अग्नि मांद्य के रोगी पड़े हैं, है ना, और इतने डिप्रेस पड़े हैं, और मैं इसलिए सिर्फ आंवल की रसायन से काम चला रहा हूँ। ऊपर से आप देखिए शरद ऋतु चल रही है, शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त का प्रकोप होता है, तो उसमें फिर आंवल की रसायन का प्रयोग हो गया। तो आंवले को मैंने ढंग से प्रयोग करा। और आप कहेंगे कि आपने ये औषधि प्रयोग नहीं, आप देखिए कि मुझे जो मेरठ में एक आयुर्वेदिक स्टोर है दवाघर, उनसे हेल्प लेनी पड़ी, जिनको मैं मैसेज करता हूँ कि यह औषधि तुम हॉस्पिटल पहुंचा दो, क्योंकि कोरोना इसमें
ना तो बाहर आ सकते, लोग क्वारंटाइन पे रहते हैं, और रियली कोरोना का अभी भी हाथ तक ऐसा है कि कोरोना के आसपास तक लोग गुजरना नहीं चाहते, लोग करता है। तो मैंने आमल की रसायन वहां प्रयोग करा, बड़े बहुत मुझे आराम मिला। पीने के लिए स्ट्रिक्टली उस जल ही प्रयोग करा गया, दिया गया जाएगा। और आप देखिएगा आनंद हॉस्पिटल में नित्य प्रति गोल्डन मिल्क, जिसको अंग्रेजी में अमेरिका में बोला जाता है, वो हल्दी का दूध दिया जाता है बड़े आराम से सारे रोगियों को। ये प्रोटोकॉल शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने इंटीग्रेटेड लाइन पे अप्रोच काम करा था, आयुर्वेद एलोपैथी को बराबर सम्मान से काम करा था। और रियली ऐसी आपदा में अगर हम साथ साथ चलेंगे तभी हम लाभ दे सकते हैं। आप देखिए, जैसी भारत सरकार ने, आयुष विभाग ने आयुष चिकित्सकों को चिकित्सा करने के लिए स्वतंत्र करा, तभी एकदम से हमारे IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया कि सब आपने ये जनता के साथ धोखा करा, क्यों आपने लागू करा, कौन सी उनकी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। उसके अगेंस्ट मैंने एक वीडियो भी मेरा काफी वायरल हुआ कि यार एविडेंस बेस की बात आप करते हो, आपके पास तो क्लोरोक्विन को आप यूज करो, एविडेंस बेस्ड चाहिएगा, और एविडेंस बेस्ड तो कोरोना पे बन ही नहीं सकता अभी 6 महीने के, तो वायरस आया हुआ आएगा, जब तक आप एविडेंस को, जब तक कुछ नया ट्रायल आ जाएगा। हमारी तो हर औषधि एविडेंस बेस्ड है, हमारी तो लाइफस्टाइल एविडेंस बेस्ड है, हमारे तो मसाले एविडेंस बेस्ड है। हमें उनकी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है कि अगर आप सोचो कि हल्दी का क्लिनिकल ट्रायल करके खाना चाहते हो तो आप खा लो, हम तो हल्दी ऐसे ही खाते रहेंगे, हमको लाभ मिला हम तो खाएंगे। और अगर आपको हमारे मसालों पे विश्वास नहीं है तो आप अपने सबको बंद कर दीजिए, अपनी जितनी मेडिसिन है उनको, जो एविडेंस बेस्ड है उनको लेकर खाना बनाइए और खाइए और लेटिए और सोइएगा। मैंने उनको भी वो करा था। तो इसलिए हमको इतना हर मॉडर्न शब्द को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी पैथोलॉजी क्या बनी है, विकृति क्या बनी है, शरीर में विकार क्या बना है, और हमारे सिद्धांतों में क्या आ रहा है, अगर हम ये देख लेते हैं तो सटीक चिकित्सा कर लेते हैं। ये स्वामी जी का शब्द थे, वही मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा नहीं था, और वो मेरे अनुभूत भी है, वो मेरे आदर्शवाद भी में है। क्योंकि हमें आयुर्वेदिक में सोचना है, एलोपैथी का विरोध नहीं करना, किसी सिस्टम का विरोध नहीं करना, योग का भी उतना ही रोल है इसके अंदर, नेचुरोपैथी का भी उतना रोल है, हम जो जो कर सकें। हाँ, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ, लकीस्ट लोगों में से हूँ। आपको शायद ताज्जुब होगा कि जब ये चल रहा था कार्यक्रम, काफी समय से हम इसी लड़ाई झगड़े में लगा हुआ था, मतलब कोरोना के कार्यों में, कहीं बोलने में, कहीं करने में। तो एक मेरे रूममेट क्लास फेलो MD के, आप सब जानते होंगे, डॉक्टर के गोवर्धन, जो हैदराबाद में रहते हैं, बोले यार आलोक तू क्यों कर रहा है, ये विधा कोरोना की चिकित्सा तो जयपुर से निकलेगी, पर हमारे तो इतना बड़ा जयपुर में फैकल्टी है, और सब लोग इतना अच्छा अच्छा सोच सकते हैं, पूरे शास्त्रीय हैं, विधान रहेगा, एक तू क्यों कर पा रहेगा। तो मैंने कहा यार ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा, पर मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि मैं खुल के चिकित्सा कर सकूं, तो उससे अच्छी कौन सी बात हैगी। उनके पास शायद अवसर नहीं आया, क्योंकि कोरोना पेशेंट को आप, और आप देखिएगा सोशल मीडिया में बड़ा एक वो आया कि जब मैं इस ट्रायल के वे में था तो कुछ लोगों ने बड़े डाल रखे थे कि साहब हमने कोरोना के इतने पेशेंट ठीक करे, हमने लंग्स में ये चेंजेस कर दिया, हमने CT के अंदर ये चेंज कर दिया, और किसी ने कोई औषधि नहीं बताई, रियली कोई औषधि नहीं बताई। औषधि आने की मेरी इच्छा नहीं रहती, मैं तेरे को सिद्धांत शेयर कर लो, हम सब औषधि यूज कर लेंगे, औषधि तो कोई भी यूज कर लेगा, सिद्धांत तो समझो कि कैसे व्याधि हो रही थी। तो उन लोगों ने मुझे ये कहा कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हमने तो 5,000 केस ठीक कर लिया, हमने जितने ठीक कर लिया, और कोई बताने को तैयार नहीं था। तो रियली उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मुझे कोई शक नहीं, हवाबाजी बहुत हो रही थी, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट में आप इंडिपेंडेंटली पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकते, या तो प्रोटोकॉल यूज करते या पेशेंट की विल के अगेंस्ट। पेशेंट जो, हमने आनंद हॉस्पिटल में हर पेशेंट के कंसेंट फॉर्म लिया था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार है, तो उन्होंने विल लिख दी तो हम लीगली हो गए। क्योंकि बड़ा डिबेट होता है कि यार गवर्नमेंट कोई ऐसा तो नहीं आलोक शर्मा को पकड़ उठा के ले जाएगी चिकित्सा आयुर्वेदिक की कर रहा पेंडेमिक एक्ट के अंदर। तो हमने कोई रोगी मरने नहीं दिया, हमने पेशेंट की अनुमति ली, पेशेंट देख करा। आप ताज्जुब करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट जज थे, कोरोना वार्ड में गए, तो एज पर लॉ तो सारी मेडिसिन खानी थी, वो भाई साहब बहुत डिप्रेस थे। आप सोचिएगा, जिस समय मेरा रात को फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसे बात है, वो आपसे तुरंत बात करना चाह रहे हैं, देखा तो बहुत घबराए हुए कि डॉक्टर साहब जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो। उन्होंने सिर्फ अपनी सुदर्शन घनवटी और ग्लोई घनवटी से ही काम कर लिया, बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो 3-4-5 दिन में निगेटिव के घर चले गए, एविडेंस है, गवाह है सारे। और आप ताज्जुब करेंगे, सारी चिकित्साएं आनंद हॉस्पिटल की हर फाइल में लिखी हुई है, उनकी प्रोग्रेस लिखी हुई है। अब CT स्कोर एक नया वर्ड आ गया। अब तो खैर इतना अभ्यास हो गया कि मैं जैसी गूगल वीडियो पे आता हूँ, पेशेंट से बात करता हूँ, मैं पहले उसका देख के बोलने के तरीके से, उसके सांस लेने के तरीके से बोलता हूँ, बेटा इसका CT स्कोर पहले मुझे वो बताओ, क्योंकि कम जिसका 11-12 या 15 के आसपास है, वो नेचुरली इतना टिपिकल
फेस उसका बोलता हैगा। मतलब अब तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही काम चल जाता है कि लेबोरेटरी का, लेबोरेटरी हमारी हेल्प के लिए है, पर लेबोरेटरी हमारी हेल्प के लिए, हम लेबोरेटरी के लिए नहीं है। हमें सोचना चाहिएगा हम रोगी को खुद भी तो देख लें। मैं रोगी की जीभ भी वहां पे देख लेता हूँ, गूगल ड्यू के ऊपर मैं रोगी का पेट की स्थिति भी उस पर देख लेता हूँ। मैंने पिक्चर कैमरा ऑन करो इसका जो है ना, और तुरंत ही अपने आरएमओ से बोलता हूँ कि जरा पेट को दबा के दिखाओ मुझे उसके फेस पे क्या आ रहा है। तो ये सब जब तक हम प्रत्यक्ष आयुर्वेदिक सिद्धांतों का रोगी रोग परीक्षा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। एंटीवायरल के पीछे हम क्यों जाएं? हम क्यों वायरस को मारने के लिए जाएं? कितने वायरस आए थे, कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे? क्या पहले नहीं आए थे? चरक में नहीं थे, सुश्रुत में नहीं थे, वाग्भट में नहीं थे, हमने अथर्ववेद में नहीं थे, हमने कब चिकित्सा नहीं करी है? तो हम उनका अनुसरण केवल ना करें, अपनी सोच लेके साथ साथ चलें, हम बहुत 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 अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है। अगर आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप देखिएगा एक बड़ा अच्छा अनुभव जो हमारा गया है इसमें, समीर पन्नग रस का। समीर पन्नग रस, 64 पिप्पली और आपका श्वास का चिंतामणि रस, इन्होंने इतना अच्छा लाभ हमको करके दिया। और एक सबसे बड़ा, आप लोग से जयपुर परंपरा के होंगे, जयपुर परंपरा में थोड़ा सा अगर आपको ज्ञान हो, संजीवनी साम्राज्य एक पुस्तक हमारे पास लिखी हुई है। आप संजीवनी के सारे घटक पढ़ लीजिएगा। क्या वो मतलब टी डायमर में काम नहीं करेगी? जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पड़ा हुआ है, भल्ला तक उसके अंदर पड़ा हुआ है, गुलची उसमें पड़ी हुई है, ये गोमूत्र की भावना दी गई है, विडंग है, शुंठी है, पिप्पली है, हरड़ है, आमलकी है, ये सब द्रव्य संजीवनी के हैं। और संजीवनी साम्राज्य को भी मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि जयपुर परंपरा का मैं हूँ, जयपुर से मैं अलग नहीं हो पाता था। तो संजीवनी का जब मैंने प्रयोग देखा, संजीवनी में मुक्त से प्रयोग करता हूँ, हर रोगी में अलग अलग जो है। एक रोगी में आपको ताज्जुब होगा कि रात को मेरे को फोन आया वहां से, डॉक्टर साहब एक रोगी तुरंत आपसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि मेरे आरएमओ के हथियार तैयार रहते हैं, वो गूगल ड्यू पे मतलब व्हाट्सएप कॉल करके मुझे मिलवा देते हैं। उस रोगी को बहुत हिचकी आ रही थी। बाय द वो बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर फैमिली से हैं पास के। तो अब मैंने कहा हिचकी आ रही है तो क्या करा जाए, मतलब बात को सब अब आयुर्वेदिक औषधि देनी है। और हमारे पास आयुर्वेदिक स्टोर जो हमने बना रखा है आनंद हॉस्पिटल में, बहुत सारी मेडिसिन नहीं थी, इतना बड़ा स्टॉक नहीं था। वो भी क्योंकि जो डिस्पेंसर है वो तो एलोपैथिक वाला था, हमें ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी। तो मैंने उस रात को मैंने कहा यार एक बाहर से पान मंगाओ और चौंसबेरी पिपली रख के इसको चूसने के लिए दो। तो उसको उसी से देखूं अगले दिन तक हिचकी उसकी कम दिखाई दे रही है। एक रोगी की जो है ना कफिंग नहीं रुक रही थी, कफिंग मतलब कफनी मतलब और तो मुझे रात को वो बात कर रहा है कि साहब मेरे को तो ये रुक नहीं रहा, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा इसको मुलेठी चूसने के लिए देनी चाहिए। अब जो पंडित जी को मैंने 64 पिपली दी थी, उनके पास मैंने डिब्बी रखी हुई दे ली थी मुलेठी वाली। तो मैंने कहा पंडित जी यार तुम थोड़ा सा जो है ना अपना मधुयष्टि दो, क्योंकि सर आयुर्वेदिक वाला आदमी कभी स्टोर के लिए वेट नहीं कर सकता। मैंने मधुयष्टि चूसने के लिए पंडित जी से रिक्वेस्ट दिलवाई, उसकी कफिंग थोड़ी कम हो गई। तो ये सब चीजें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इन कोरोना पेशेंट में हमें ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी स्टेबल करने का मकसद रखना पड़ता है। और इससे अगर प्राणवायु स्थिर हो गई, प्राणवायु कार्य करने लगी, वही तो हमारी इम्यूनिटी है। और अब बाकी हम सारे टेस्ट हम करते रह जाएंगे जो है एकदम से जो है। और जितना प्राणवायु पे डिपेंड रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, उसकी उतना ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ने लगता है। फिर वो क्या कहते हैं, जो आपके दोष जब बढ़ जाते हैं, धातु में आगे चले जाते हैं, तो व्याधि कष्ट साध्य और कृष्ट साध्य हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। पर तो जितने भी केसेस थे आनंद हॉस्पिटल में इस टाइप के, वो हम लोगों को मिले, हम लोगों ने चिकित्सा करी और हमारे ग्रुप ने हमें काम करके दिया। अगर ग्रुप की सलाहें नहीं मिलती हैं, ग्रुप में डिबेट नहीं करते, ग्रुप में क्वेश्चंस नहीं करते, अगर हम मिलके काम नहीं करते, क्योंकि आपके पास तो सब इंस्टीट्यूट्स हैं। कल मैं देख रहा हूँ जामनगर यूनिवर्सिटी की आज प्रोफेसर साहिबा आई हुई थी, कल एम्स के थे, उधर CCRS के। तो आपको तो बहुत बड़ी टीम है, हम लोग रिटायर्ड पर्सन हैं। ठीक है, मैं चिकित्सक रहा हूँ, चिकित्सा मेरा शौक रहेगा और शौक भी रहा है, पेशा तो सबका होता है, मेरा शौक रहेगा। आज भी मैं उसी ढंग से पूरी व्यवस्था पे ऑनलाइन और IMT आयुर्वेदिक कॉलेज आनंद लगातार इनसे लगा रहता हूँ जो है, बहुत सारे काम करता रहता हूँ। पर एक शौक की वाली बात थी, जुनून था, एक टीम बनाई, हमने कार्य करा, छोटे छोटे से काम थे जो है। और इसके अलावा मैंने पेटेंट मेडिसिन बहुत कम यूज करी,
क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी। मेरे पे प्रेशर था कि सब हमारी मेडिसिन यूज़ कर लीजिएगा, हमारा ये यूज़ कर लीजिएगा। हाँ, आजकल रोगियों में फीवर बहुत कम मिल रहा है। आजकल प्रॉब्लम है डिस्निया की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ज़्यादा मिल रही। ब्रीदिंग का फीवर वाले केसेस तो रेयर हैं, पहले शुरू में आए थे, आजकल नहीं आ रहे। जुकाम, खांसी, जुकाम भी बहुत कम है। कफिंग वाली प्रॉब्लम मतलब वही प्राणवेश होती दूसरी में उतना ही मिल रहा है, उसके हम कार्य कर रहे हैं। पेट की खराबी मिल रही है, इससे पे हम कार्य कर रहे हैं। तो इससे हमें जो लाभ मिल रहा है मैंने वो शेयर करा आपसे। हो सकता है कि मैं कुछ छोड़ गया हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों जैसे हाईटेक तो नहीं हूँ, पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं था। हालांकि सुबह डॉक्टर संजय जैन ने मुझे कहा यार अब पीपीटी प्रेजेंटेशन, मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही यूज हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लूंगा, शायद लोग समझ लेंगे मेरी बात को, और नहीं समझे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्या हम इसको रक्तज व्याधि में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सारे अवयव जो अफेक्टेड कोरोना से हो रहे हैं वो रक्त से निर्माण हो रहा है। ये मेरी सोच है, मुझे शेयर करें, मुझे बताएं। मैं तो सीखने के लिए आया हूँ। अंत में मैं पुनः डॉक्टर भारती का, ये डायरेक्टर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने उन्हें से भी एनआईओ मित्रों का, जिनकी वजह से आज मैं कुछ बन पाया, सीख पाया। आप सोचिए कि श्री कृष्ण खांडेल जी लगातार मेरे से कनेक्टिविटी में रहते हैं, बघेल साहब, सभी लोगों से मेरा बना रहता है। जयपुर से दूर जरूर, पर जयपुर से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। एक मेरा एनआईए ग्रुप चल रहा है, एक वैशाला ग्रुप चल रहा है, सभी में डिबेट होती रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जयपुर ने मुझे आज 40 साल उम्र मेरी कम कर दी, मैं आज फिर पीछे चला गया, 26 साल का हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you so much. It was really an informative and wonderful experience you shared with us. Thank you so much for that. There are lots of questions, but due to the limited time, we'll be taking few questions with you, sir. Yeah, okay. Sir, Dr. Pratima says, in your ward, Ananda Hospital, Keetanasak Havana was done. Can you share the contents? और my family planning. क्या बोले? Sir, I'll repeat the question again. Dr. Pratima says, in your ward, Ananda Hospital, Keetanasak Havan was done. Can you share the ingredients, sir? ऐसा हैगा, मैं रिपोर्ट तो दिलवा दूंगा। ये जो आनंद हॉस्पिटल हवन करा था, वो जितने भी मीडिया थे, टीवी चैनल थे, उस समय उस दिन सभी ने कवर करा था। One patient having complaint of hot flushes, joint pain. Okay, thank you, sir. Moving on, sir, did you experience with pregnant female in your ward with COVID positive? What नहीं, सॉरी, management? कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया था, क्योंकि मैं वही बोलूंगा जो था। Okay, thank you so much, sir. Here we come up with end of our webinar. Thank you all for your participation. Thank you to all the respected speakers who gave their valuable time to us. I hope this 2 days webinar is really fruitful for all of us. Thank you all speakers participate for making this webinar successful. Here, I would like to request our respected Dr. Sonu Verma ma'am for vote of thanks. Over to you, ma'am. Please proceed. Good afternoon to all. On behalf of PTSR Department, National Institute of Ayurveda, Jaipur, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly or indirectly contributed to this national webinar. First of all, I would like to thank our Chief Patron, Honorable Minister of State Independent Charge, Minister of Ayush, Shri Shripad Yasso Naik sir, and our patron, Honorable Secretary Padma Shri Vaidya Rajesh Kotecha sir, for their enthusiastic support. Thank you so much, sir. I want to express my respect and gratitude to our beloved, encouraging,
respected Director Professor Sanjeev Sharma sir, under the leadership of whom we are always motivated and inspired to do something better and best. Thank you so much, sir, for your unflinching support. I extend my sincere thanks to Professor K. Shankar Rao sir, Dean PhD, for showering his blessings on us. His unconditional support remain always with us. Thank you so much, sir. Then I want to thank also our eminent speakers. First of all, I must mention our deep sense of appreciation to Dr. Sujata Kadam ma'am for her detailed explanation on COVID-19 management in pregnancy from all parameters. Further, we are grateful to Dr. N. Shrikant sir for sharing research works carried out all over India. I may like to express our sincere thanks to Professor Lakshmi Priya Dei ma'am for giving an excellent coverage on Ayurvedic perspective of COVID-19. I also wish to express my gratitude to Dr. Alok Sharma sir for his extraordinary reviews on this pandemic regarding all aspects. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our heartily thanks to Professor K. Bharti ma'am, HOD, PTSR Department, NIA Jaipur, for the perfect logistic support and guidance she has extended to all of us at this webinar and also at each and every aspect. I must say she is a sutradhar of this webinar. Now moving on, I also extend my thanks to Dr. B. Pushpalata madam and Dr. Hetalesh Dave ma'am for their guidance, blessings and continuous support with us. Then a special thanks to Dr. Poonam ma'am who made all the arrangements so perfectly that this webinar was going on with great success and ease. Thank you so much, Poonam ma'am. I also want to say special thanks to IT team of NIA, especially Parveen ji. Thank you, Parveen ji. I also extend my warm and tons of thanks to Dr. Khushbu, Dr. Swati Malsaria, Dr. Divya Patil, especially for their untiring efforts, dedication, devotion, and hard work for this webinar. I also want to express my gratitude towards our PhD scholars, PG residents who were directly or indirectly connected with this event. They are just like the backbone of our department. And I also want to thank our stars, departmental stars like Kanta ji, Ratna ji, Durga ji, Nikhil Babu ji, all. Last not the least, I want to express my gratitude and respect to all the active participants who were joined with this event through YouTube and Facebook. In last, I want to thank each and every person who joined with this webinar directly or indirectly. हम सभी प्रसूति विभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।